थोड़ा सा सही कर। इसकी दूरी सही है, यहाँ से फेस दिखेगा सही से। कितने लोगों का कवर होगा फेस यहाँ कैमरे से? वो एक कैमरा वो भी है। अगर अपने को सबको कवर करना है तो उस कैमरे से। सब कुछ कवर करना पड़ेगा, अक्सर सब दिखने पड़ेगा कि कौन लोग हैं। कैसे? यहाँ जो बैठेंगे ना, हाँ। सभी लोगों को दिखाना है आईएमसी में कौन लोग बैठे। ओके। वहां से कोई बोलेगा तो आवाज बात टेस्ट कर। एक। हेलो अभिषेक। एक। यस सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो अभिषेक है? हाँ सर। हेलो। यस सर। आवाज पूरी आ रही है? आ रही है सर। आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो अभिषेक है? हाँ सर। हेलो। यस सर। आवाज पूरी आ रही है? आ रही है सर। ये आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत ठीक है, चक्कर कर। हेलो अभिषेक है? नहीं। हाँ सर। सर दो में से एक माइक बंद रखना पड़ेगा। पूरी आ रही है? आ रही है सर। ये आवाज क्लियर आ रही है? ये इको क्यों हो रही है आवाज? हेलो। भाई किसका ज्यादा अच्छा है, ये वाला वो वाला? ये हेलो। हेलो। अभिषेक। हेलो हाँ अभिषेक जी। सर। हेलो। हाँ जी। अभी थोड़ी हो रहा है इको। नहीं अभी नहीं हो रहा, ये क्या एक्चुअली दो में से एक माइक बंद ही रखना है ना सर। हाँ, वो तो बात है। हाँ वो उसी की वजह से इको था, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या आपके पास कोई और है क्या? डबल आवाज आ रही है। नहीं नहीं, एक ही है सर, ये दूसरा तो उसमें कमेटी रूम में लगा रखा है सर मैंने, और होस्टिंग में अपने रूम से ही कर रहा हूँ सर। ओके। हाँ सर। अभी ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है? अभी ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
ये यहाँ से जो अपलोड वगैरह करने का राइट दे रखा है ना, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल शेयर सर, करने वो के लिए। कर रखा है शेयर स्क्रीन वाला सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रेजेंट करके देख लीजिए सर। तो इसमें लगाएंगे। तो शक्ति का फोन आया किसी तरह पर क्यों फोन आया कि वो आ रहा है ऐसे काम है तेरे को इसलिए फोन कर रहा होगा ये आईएमसी मीटिंग वाला आईडी है अभी अभिषेक जी हाँ जी सर। अभिषेक, हाँ सर। ये पूछ रहे हैं, ये मीटिंग वाला ही आईडी है ना? हाँ नहीं वही नहीं आईडी है सर। इस पे शेयरिंग चाहिए गाइस हाँ इसी पे है सर, शेयरिंग ऑन है। ओके ओके, मैं ट्राई करता हूँ। 4/11 ही है, 4/11 में कर। हेलो पहले फाइल खोल के फिर शेयर करनी है ना? हाँ पहले फाइल खोल दीजिए सर, और फिर जूम पे आके वो शेयर वाला बटन दबाइए सर। शेयर स्क्रीन। हाँ शेयर स्क्रीन सर। फिर वो जो फाइल ओपन करिए ना सर, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक। अब शेयर हो रही है? हाँ हो गया सर, विजिबल है। अरे सर, दिख रहा है? हाँ सर, वो दूसरे अब वाले पूरा कंप्यूटर में भी देख सकते हैं सर, उसमें भी क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। पूरा दिख रहा है फुल स्क्रीन पे? हाँ फुल स्क्रीन पे है सर, जैसा आपको दिख रहा है वैसा मेरे को दिख रहा है सर ये। ओके। ये हाँ ये साइज ठीक है सर। इसको मैं बंद करूंगा तो फाइल बंद हो गई कि अनशेयर करूं? नहीं अनशेयर करना पड़ेगा सर, ये फाइल तो बंद हो जाएगी पर ये स्क्रीन शेयर होती रहेगी फिर। कैमरा ऑन करने के लिए वापस हमको शेयर स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। पॉज शेयर या कौन सा बटन है वो? पहले अनशेयर करना होगा अनशेयर स्टॉप सर, शेयरिंग एक अभी तो रेड कलर में आ रहा है सर, वहां पे ऊपर, ऊपर या नीचे होगा सर वो। क्या? ऊपर या नीचे होगा सर, एक वो रेड कलर में जो ग्रीन पट्टी आती है ना, उसके नीचे रेड वाली पट्टी आती है एक छोटी सी। ये स्टॉप शेयर हो गया। हम्म, अभी शेयरिंग बंद अभी हो गया। दूसरी फाइल और खोलता हूँ। ये बैनर बैनर आ रहा है सर दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इश्यू तो नहीं है ना नहीं नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, होगी भी नहीं दिक्कत, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं हाँ वो सेकंड वाले में थोड़ा सा देखना है बस, है। और इसमें सर जो इसके बाद जो होगी ना 2:30 बजे वाली, इस हाँ उसमें रहेगा थोड़ा, उसमें क्या है कि मेंबर ज्यादा है ना, हाँ हाँ उसमें थोड़ा सा ये तो वो दिक्कत। एक जो सॉरी। एक सर जो दूसरा लगाया ना अपन उसने हाँ पूरा हाँ। कवर कर रहा है रूम हाँ वो भी दिख रहा है सर, कोई वो दिक्कत दिखा था हाँ ये वाला नहीं। हाँ वो भी दिख रहा था। हाँ तो इससे ये वाला इससे अपन कवर कर लेंगे पूरे हॉल को हाँ आवाज बीच बीच में कट रही है थोड़ी सी, क्या इशू है या नहीं ये तो नहीं नेटवर्क, करते आपकी तो नेटवर्क इशू है क्या, पता नहीं। हमारी आवाज अच्छी आ रही है? हाँ सर, बीच बीच में नहीं बट। आप ये सब क्लियर आ रही है सर आवाज नहीं आवाज तो क्लियर आ कोई रही बात। है, पर बीच बीच में कुछ डिले, वर्ड गायब हो रहे हैं जैसे कि नेटवर्क के वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत। नहीं नेटवर्क तो फुल स्ट्रेंथ है हाँ फुल स्ट्रेंथ है नेटवर्क पर हाँ।
नहीं, जैसे आप दूसरे वाले में भी आके सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। उसमें दूसरे पे कोई बैठा है क्या बंदा? नहीं नहीं, वो उसी रूम में है ना, इसलिए उसका ऑफ कर रखा है स्पीकर और माइक्रोफोन। नहीं, इस उसमें हेडफोन में एक बार लगा के सुन सकते हैं आप थोड़ा सा। वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। क्या काम है यार, देखने में क्या करते हैं? ये तो जो दूसरा है वो पूरा कमरा कवर, रूम कवर करने के हिसाब से किया है। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया सही है। कैमरे में सब आएंगे नहीं? हाँ, इसमें नहीं आएंगे ना, पर फिर ये कि डिस्टेंस से मैनेज करेंगे तो वॉइस का इशू आएगा। हाँ, या तो फिर क्या है कि जो एक्सटर्नल एक वेब कैम लगाना पड़ता है इसके लिए फिर। नहीं, एक्सटर्नल वेब कैम में भी डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो इशू आएगा ना। अभी फाइल शेयर हो रही हो रही है सर। है? हो रही है सर, हो रही है। दिख रही है एजेंडा आइटम को, प्रेजेंटेशन। हाँ, दिख रहा है सर। ये ये भी दिख रहा है सर। ठीक है, साइज भी सही है सर, पूरा क्लियर दिख रहा है। लिंक मिल गया यार अटारी में सेट में देखो ना, खाली मेरी खराब है। सारे मुझे। लिंक आईसीआर सॉन्ग आपके यहाँ से चलाएंगे, यहाँ से चलाना है? आप वहीं से चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 11 बजे की लिंक है, 2:30 बजे का मांग रहे हैं अरे यार, मेरी बेटी का टाइम है। 2:30 बजे वाला नहीं, 11 बजे हाँ, कहते हैं। देखता हूँ मांग रहे हैं। मैं तो नहीं। 1 मिनट सर, आईसीआर सॉन्ग। ये जी, अब इस पे जो सेव करेंगे वो स्क्रीन पे दिखेगा। अभी ऑडियो नहीं आ रहा है इसका। आ रहा है सर ऑडियो, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो सुनाई दे रहा है अभिषेक? बिल्कुल आ रहा है सर। आईसीआर सॉन्ग। आईसीआर का सॉन्ग नहीं आ रहा सर। आपकी आवाज आ रही थी। वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई होगी सर उससे। उस वाले पीसी पे स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। तो इधर से ही कर दो, ऐसे ही। तो उधर से ही कर लेना प्ले। ठीक है सर। तो प्ले में सर वही रहेगा, थोड़ा सा क्या है कि फिर होस्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसलिए। दोनों आती है। हाँ, फिर वो उसके साथ स्क्रीन शेयर रहती है तो फिर होस्टिंग नहीं हो पाती सर, फिर वो उसमें थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है फिर।
हरित भारत की विषधन पशुधन मानव जीवन दुग्धवान सकल गात्र सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की हिम प्रदेश से सागर तट तक मरुधरती से पूर्वोत्तर तक हर पथ पर है शक्ति शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। अपन यूं करते एक ही स्क्रीन को शेयर करते तो ठीक रहेगी, इसी को कर देते इसी से चला उस पे कलर नहीं नहीं दिक्कत कुछ नहीं। दो फिर स्पीकर एक साथ चलेंगे तो हो सकता है वो बाउंस। तो अपन एक पे ही कर देना, फिर वो शेयरिंग इधर से उधर शेयरिंग शिफ्ट कर लो। कैमरा तो चलेगा ना? हाँ कैमरा चलेगा। ये मैंने एक फोल्डर बनाया ना, उसमें डाल दो उसकी कॉपी अच्छा होगा। डेस्कटॉप पे IMC करके फोटो आया है, उसमें कॉपी करके डाल दो। जय जय मित्र कृषक की शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। 1%। अभी यहाँ लाइट चली गई अभी तक। एक अच्छा ओके सर। नहीं स्क्रीन शेयर कहाँ की थी? नहीं स्क्रीन शेयर कहाँ की? हो जा रहा है इनको।
जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मात्र फल यंत्र संवर्धन, वैज्ञानिक स्थिति की का संरक्षण, शस्य श्यामला भारत की। जय जय कृषि। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मात्र फल यंत्र सुवर्धन, वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण, शस्य श्यामला छवि भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती पे पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की।
हाँ, तुमने इसके कहीं दरवाजा तो लगवा दो। टीवी के दरवाजा तो लगवा दो। सर दरवाजा ये तो जस्ट करते ही है, अंदर आने का है तो ये जस्ट सीख रहा है। एक्चुअली क्या है, काफी टाइम से रिनोवेशन हुआ नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, तो दीमक का माइनर इशू हो गया। दीमक को सबसे बड़ा क्या, बिल्डिंग पुराना है, अब उसमें क्या स्टोन वाल है। अब जैसे आप केबल की यहाँ खींचो तो दूसरे तीसरे दिन गिलेरी खा जाओ। प्रॉब्लम इतनी बार चुने कि एक को तो थोड़ा चार दूर से टूट जाए। सांप के रूम में भी एक इसका स्पीकर लगा दूं क्या? और स्पीकर लगा दूं? ये अभी जो पहले सिस्टम चल रहा था वो नहीं चलेगा। नहीं वो तो चल ही जाएगा, इसमें और लगा। मेरा ये था एक ही इसको मशीन को शेयर करो। वो आपका वाइडर व्यू के लिए वो यूज हो रहा है ना, वो कैमरा तो यूज हो रहा है ना। है। हाँ जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की। जय देश से परिषद भारत की। मरुधरती से पूर्व है तक मरुधरती से आशा पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। जय जय कृषि परिषद भारत। जैसे म्यूट करने
डॉक्टर जहांगीर, हेलो हेलो, डॉक्टर जहांगीर, वीडियो क्लियर नहीं है उसकी सॉन्ग की।
दीपक वगैरह थोड़ी कुछ चलानी। शुरुआत में जला देंगे तो तैयारी नहीं कर रखी है कैसे या तैयारी नहीं है कुछ दिन जलाने की। नहीं चल रहते हैं ना। कर दी
हेलो 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 हेलो
नहीं अनम्यूट, नहीं अनम्यूट भी हमने कर लिया। नहीं मीटिंग स्टार्ट हो गई क्या? हेलो, मैडम कहाँ है? मीटिंग? हाँ हाँ नहीं हुई है, मैं जुड़ा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। हाँ, बुद्धि क्या है? वो तो धाकड़ पूरी भी बना चला गया, तो उससे दोनों उसी से चला गया। अरे हजमुख जी कुछ स्वागत वगैरह क्या रखा है, कुछ प्रॉपर्ली है? हाँ ऐसा आपका सामान तो है नहीं कुछ। उसके आगे हाँ इधर ऊपर ले
पेट्रोल यहाँ से मेरा चल जाएगा यहाँ पे। सर पास हॉल में रखोगे यहीं पे रखोगे यहाँ ले आओ ना पास हॉल में रखोगे पास वाले कमरे में रखोगे यहाँ आग ऊपर ना स्मॉल ये रखे ये यहाँ रखो उधर छापे कुछ काम हो तो अजय जी के
ताकि वचन जी से बात करें। डॉक्टर जहांगीर। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मीटिंग शुरू करो आपको भाई। आईएमसी मेंबर के नाते हमारी तरफ से नमस्कार। सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। शुरू हो गए, तो खत्म हो वो लोग क्या सो रहे हैं क्या अभी? आप कौन बोल रहे हैं? सब सो- शुरू तो होगी। कब शुरू होगी डॉक्टर साहब ये? बस सोने ही वाली है डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार बाबूलाल जी। नमस्कार नमस्कार सर। और क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, स्वागत है आपका। बस बढ़िया है। अब मैं थोड़ा सा क्या है फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ तो ये बस आपका थोड़ा सा चालू रखूंगा। हाँ तो अब वहाँ देखता हूँ क्या सुविधा मिलती है एयरपोर्ट पे ना, ये हाँ हाँ। निकलना है। ठीक है ना? ठीक है।
हाँ थोड़ा देखने में नहीं रहेगा इसका प्रेजेंटेशन हमारा फर्स्ट क्लास। अगर हम उस तरह बैठेंगे हमें उस तरफ कैसे आते पुलिस से कमरा ले रहा है। चलिए माइक है या आवाज जाएगी? नीट जाएगी। शुरू करो। ठीक है। ठीक है उसका साहब उसके बाद हम साहब का वेलकम जो नंबर से उसके बाद हेलो अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर BL जहांगीर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ICR अटारी जोधपुर, और अभी फिलहाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार भी देख रहा हूँ। और इस आज की IMC मीटिंग में मैं गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। IITR से DR मिश्रा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर। द्विवेदी जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। इस IMC मीटिंग में मैं मेंबर सेक्रेटरी के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मीटिंग की शुरुआत करते हुए मैं सभी अतिथियों का और हमारे जो IMC के मेंबर हैं उन सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ फिजिकल मोड में हमारे इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर JP मिश्रा साहब हैं, सर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ फिजिकल मोड में हमारे साथ उपस्थित है हमारे आदरणीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ IMC ADG ICR डॉक्टर आर के सिंह सर आपका स्वागत है। हमारे साथ IMC के मेंबर के रूप फिजिकली मेंबर है अवेलेबल है सक्षना मैडम, और बाकी जो हमारे माननीय मेंबर हैं वो ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ जो ऑनलाइन दिख रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर AK शर्मा जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICR DRM बरगपुर, डॉक्टर AP द्विवेदी जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रोनॉमी एट ICR IASR लखनऊ, और डॉक्टर देवराज मिश्रा जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ICR IIPR कानपुर। आप सबका इस IMC मीटिंग में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस शुरुआत ICR के सॉन्ग के साथ करना चाहता हूँ। अभिषेक ICR सॉन्ग चला दो। ऑडियो नहीं आ रहा है। पारे
स्थिति की का संरक्षण, हाँ आ रहा रस है। श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। धन्यवाद अभिषेक। अभी मैं हमारे बीच उपस्थित सभी आदरणीय चेयरमैन से और चेयरमैन सर से और मेंबर से निवेदन करूंगा कि अगले चरण में माँ सरस्वती की वंदना करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए। धन्यवाद हमारे कमेटी के चेयरमैन साहब का और माननीय सदस्यों का उसकी वंदना के लिए। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी पे मैं हमारे बीच विराजमान हमारे कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मिश्रा साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर आर के सिंह जी एडी साहब का स्वागत सम्मान करें। साफा पहना करो उस पेड़ लेकर। सबसे निवेदन है कि तेरा मैडम का भी स्वागत करें। हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष भटनागर साहब से निवेदन है कि हमारी इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जेपी मिश्रा साहब का स्वागत करें।
तो साथ ही प्रकाश email जो है उनका अपडेट किया जाता है। धन्यवाद भटनागर साहब का। अब औपचारिक स्वागत के बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करता हूँ हमारे समिति के अध्यक्ष जेपी मिश्रा साहब से कि वे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दें। Thank you, Dr. Sanjay. All the worthy members of Institute Management Committee who are present physically at KVK Udaipur and also who have joined online. Especially, I join my colleague Dr. V. Jagir to extend my heartfelt thanks and welcome our young, dynamic, energetic Assistant Director General Dr. R.K. Singh Saab, Madam Sena, who traveled from, both had traveled from Delhi to join this important meeting. I also extend my warm welcome to Dr. D.R. Singh, sorry, Dr. D.R. Mishra. We and Dr. Mishra have worked in IIT together. So he is a very worthy member and he has not missed any IMC meeting of ATARI. So he always present and it is his duty that he spares time to participate. I also welcome Dr. Dwivedi, Dr. Sharma. Dwivedi साहब भी पिछली मीटिंग में भी थे and he has given very constructive recommendations how to improve the functioning of the and online our colleagues at ATARI Jodhpur, they have also joined this meeting and they will be making a brief presentation before IMC what they have planned and what they are working with and what they have achieved during the last 1 year. So in the 15th IMC, I welcome all of you and I also solicit your strong recommendations, comments, suggestions for improving the functioning of the KVKs as well as ATARI Jodhpur, which has always been extended by you time and again. I expect the same sort of support and recommendation this time also. Today's agenda is very clear that we have 3-4 agenda. Important one is that the budgetary support that what we will be getting in 24-25, they have to be vetted and also recommended by the IMC. There are a lot of demand from many KVKs for new vehicles because their old vehicles have already run more than 6.5 years or more than 1.5 lakh kilometers and they are liable to be condemned. So they have already submitted the required papers. I think 10 KVKs have submitted those papers. Those have been circulated to you. You might have gone through it. Another 2-3 items are related to work at ATARI. One is construction of a water harvesting structure, and there is solar system and renovation repair of ATARI buildings. So these are the few items that will be put forth before you, along with the action taken report that we have done with the support of ICR headquarters on your recommendation of the 14th IMC. So last 1 year, it has been quite rewarding in terms of ATARI Jodhpur. We have introduced a few new projects and also submitted one project for
the funding from ICR headquarters under Corpus Fund. Many new sponsored projects, thanks to Dr. R.K. Singh Saab, because of his very hard work and also persuasion, continuous persistence persuasion with the departments, that we have been able to roll out many new sponsored projects. So all those will be presented before you. Some of them are related to model pulses village, model oilseed village, the fermented organic manure promotion program. Also, we have conducted few studies also with the help of KVKs on how agro-advisories have played role in reducing the risk at the farmer's field, and how they have enhanced the income and productivity of the farmers, along with the ongoing number of projects like the crop residue management, the CFLD on oilseed, CFLD on pulses, tribal sub-plan, and also the SCSP sub-plan. So all those details will be presented before you. I will not take much time and request my Assistant Director General, Dr. R.K. Singh Saab, to kindly say few words and also guide the members and also our team at Jodhpur, so that we can initiate the proceeding. Thank you, Dr. Mishra Saab, honorable members of the committee, worthy director of Jodhpur ATARI, Dr. Mishra ji, my dear colleagues from ATARI headquarters Jodhpur, and friends connected from the KVK system, very respected ma'am from headquarters and from the division of finance. I'm really very pleased to be here with you all people. I will have the more interest to listen about the technical programs in summary, because this meeting is basically to ease the business and to enable the worthy director about the progress of developmental activities particularly, and helping him to have the that enabling environment at the institute level, particularly in terms of purchase of items, or even some if constructive works are there from the EFC which are already been approved. So how to go ahead? So that will all together will be taken, but my interest will be to see the progress from the ATARI Jodhpur, how the projects which are being sanctioned from the headquarters or other departments are being undertaken and what the progress have been made. And moreover, I would rather not instruct, rather would urge the scientific fraternity which are in ATARI Jodhpur, and they have the association with other scientists of the KVK system and parallel to the SAU system, that how best we are really able to move ahead, particularly on the current challenges which we are facing. There is nothing to be discussed separately, particularly how to improve the efficiency of the system when we are facing the institutional issues of many. There is no need to discuss. I am more concerned of KVK system. Since we have different host system, we have different rules and regulations to follow. So those things are on the way when we are going to pursue the items from the ATARI or KVK system. For example, in CRM project, just I am giving one example. There are machines proposed and budget has been allocated from the Ministry of Agriculture, which are to be processed and purchased by the host department, because these institutions under which KVKs are working. And for that, window is very fixed, time is very fixed, and within that you have to float the tender, purchase the things, so that machines are particularly going to be used for the targeted activities to be completed before the December, because after that, though activities are now being advocated by the DFW that you have to run year round. However, the peak is of this October and November. So for that, we need to have the very fast track purchase of the items. Second thing, in nutshell, I want to communicate particularly to the KVK system that while I was visiting here, the KVK of this Udaipur 1, which is led by Dr. Bhatnagarji, who is sitting with us, and along with our worthy director, there are good things people are doing at the KVK level, particularly from animal point of view, because the
state Rajasthan is having the backbone with the supported by the animal sector, and there are good developmental activities supported by the science from the MPOUT and Maharana Pratap Agriculture University. But how to maintain the data set? How to maintain the data set into the digital form, so that you can claim that this is my baby, this is my product or the process which we have developed. For example, if you are maintaining the nursery block, or even if you are maintaining some environment related work, for example, soil or water conservation related things, there are several activities going on. So how are you really maintaining the data set? Because you have also to prove as a scientist that this I have done as a part of scientific work. So those things are already there on the ground, but best is how to characterize that, quantify that, put into the database system, and for that, the help of particularly the social science people are much expected. Though it is the teamwork of agronomy, soil, engineering, animal, and all other scientists at KVK, but it is to be particularly led by the social scientist people, because KVK is more of the social science frontier of social sciences. So this is my second concern. Third concern is that we have to have the, that now new visibility. I'm using the word new visibility required. Much different from the past, because the government of India has already put a lot of emphasis in the name of Viksit Bharat, or even we are going to complete the Sustainable Development Goals by 2030. So by 2030, we will also be evaluated by the government of India that for SDGs, what the KVK people have contributed. I am working on a framework at the headquarters. That framework will be circulated to all the KVKs. I think within 6 months or 7 months, we are working to validate that kind of format. And whatever the work you have already completed within 5 years or 10 years, which you can claim, which you can say that, yes, I have confidence on this work. We are not going to claim that every bits of information or data. We are going to only claim before the government by the KVK what we have done, and which we can claim that, yes, this we have done, and we can check it. You can have the ground truthing on the work. And after compiling that into the set framework, we can place before the government in order to increase the visibility of KVK system as a frontier center. So these are my 3 concerns. Other than that, whatever I have said will be captured in my presentation after the meeting is over, that how the social science people have to capture the different dimensions which are appearing, which are in the high agenda of this government of India, not only in the name of frontline demonstration, say for example, oil or pulses. You have a lot of things you are doing in the name of soil, water, climate, agro advisory, pulses, oil. Even for that matter, carbon content पर भी आप काम कर रहे हैं in many ways. कार्बन क्रेडिट और कार्बन फार्मिंग की बात अभी लेटेस्ट आने लगी है. But you are already working ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आप काम कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग पर आप काम कर रहे हैं. तो ऐसे डेटा सेट को हाउ वी आर गोइंग रियली टू कैपिटलाइज एंड add the value to the not only KVK but also to the government of India, that whatever the money you have spent 1 rupee on us, how many times we have converted that money into the prosperity or the development of the nation or the society as a whole. So these are some of my concerns which will be shared before you, and we will discuss in details, so that the purpose of this IMC meeting, as in the beginning I have said that it is enabling the environment of ATARI in the name of purchase or something, is going to be complemented by the work which we are going to, that claim of last 1 year, or we have already planned for the coming 1 year or 2 years. So with this, I wish that the committee will have its own fruitful discussion, and we will be successful to achieve the target set up by the ATARI Jodhpur. And we all are here to support. I also welcome and thanks the ma'am from the finance division of ICR, that in her presence also, whatever the nitty-gritty things are there, we will be learning rather from her how best to improvise the purchase or the processing of the applications or the proposals on the financial items or the capital items. With this, I wish you all the best and welcome you all in this meeting. Thank you so much.
Thank you, sir. Thank you so much for your opening remarks and guiding us to proceed further. With permission of chair, I would like to present the action taken report of 15th IMC, which is being prepared on the basis of the last IMC recommendation, and that has been approved by the HMD of ICR, Agriculture Extension. On that basis, we have prepared the action taken report, and I would like to present it, share it with all the members. Is it visible to all? Yes, it is visual. Thank you, sir. So, with permission of chair, I am presenting this action taken report of 14th IMC meeting of the institute held on November 15, 2023. That was also held in hybrid mode at our one of the KVK of Rajasthan, Jaisalmer first, and the proceeding prepared were submitted to SMD, and accordingly we have received the approved proceeding and comments from the ICR. So agenda number 4.3 was to total outlay of KVK and DE and ATARI Jodhpur headquarters for 23-24 was 12,121 crore lakhs, and which was approved by the IMC, and ICR comment is that the outlay presented in the item number 4.3 of the proceeding is as per the B of the 23-24, and at the end of the financial year on 31st March 2023, what we have received, we have almost 100% achieved the target of fund utilization. The agenda number 5 was replacement of 11 old vehicles at 11 KVK and replacement of the old vehicles. This was approved by the IMC, and the ICR approved the condemnation certificate of 11 vehicles from these KVKs: Bikaner first, Junjunu, Jaisalmer first, Bundi, Kota, Bhilwara, Pratapgarh, Chur first, Jaipur first, Alwar second, and Ajmer, as these were found in order and approved. White ICR number is referred here. And for procurement of a vehicle, ICR has given this recommendation to follow the proper checklist and submit a separate proposal to purchase the new vehicles from the GEM. And accordingly, we have submitted the proposal for 13 vehicles. The 11 vehicles were approved in this IMC, and 2 vehicles, including one from Jaipur second and one from for ICR or ATARI Institute. So we proposed 13 vehicles purchased, and out of these vehicles, as per the availability of funds, we have released funds to 9 KVK. And out of these 9, 5 has already purchased the vehicles through GEM, and 4 KVKs are in process. And we at ATARI have procured the new vehicles through GEM. Agenda item number 6 was various work proposal contained in the UFC of 21-26 for ATARI Jodhpur, and IMC approved the proposal, and the ICR commented that ATARI may follow the contents of ADG PIM's letter number given here, and delegation of power for the civil works. And these works included, the most important one was the farmer hostel at 5 KVK, which are KVK Pratapgarh, Udaipur second, Jaipur second, Bhilwara second, and Hanumangarh second. And we are happy to inform that 100% budget of 91.50 lakh rupees have been released to all these KVK, and works has been completed at these KVK also. The fund to KVK Delhi was
has not been released due to non-availability of funds, but when it is available, we will release the fund. And another agenda in the same civil work was release of rupees 5 lakh to each KVK, 40 KVK. We have released. So these were the action taken report of the last IMC. Here I am. Only one thing that I want to bring to the notice of the members of IMC, that although the IMC approved a bit higher allocation, which was contained at B stage, but at RE stage, there have been a significant cut for all the ATARIs, including ours. So whatever we received, almost 100%, just 2 lakh were unspent. Otherwise, we have spent entire amount. So that was a significant achievement in 23-24 on the fund and finance management. Another thing, because 2 vehicles were approved by ICR headquarters as well as by IMC based on the 13th meeting of IMC, and in 14th IMC, 11 vehicles were approved both by ICR and also by IMC, out of which 1 at ATARI Jodhpur and also 5 with other KVKs. They have already been purchased and remaining are in the process. So we will be completing depending upon the availability of funds. Thank you, sir, for the adding value to the presentation. Now, going forward, comments I invite the observations and also comments on the action taken report. If any member has some observations, otherwise we will move to the next agenda item. So I feel the ATR is approved. Delhi में there are not only funds crunch. There is a policy issue also, because NGOs KVKs को अभी there is some discussion that उनको किसान घर के लिए पैसा internal, I mean communication कहीं नहीं है, but एक internal feel ये है कि उनको थोड़ा hold करके रखना. बजट तो अभी आप जो वर्क्स में हमें रिलीज करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी सिग्निफिकेंट अमाउंट, बट वो जब तक क्लैरिटी ना जाए कि एनजीओ के भी केस को या पीएसयूज के भी केस को या अदर इंस्टीट्यूशन के भी केस को किसान घर के लिए पैसा देना ही नहीं देना, दैट्स व्हाई वी आर होल्डिंग. Sir, first of all, I congratulate to Director ATARI for just utilize the 100% funds during 31st March 2024. Sir, in this case, total out of 11 vehicle, only 5 plus 1, 6 purchased. Then others is under process. So there is some fund problem in the previous financial year or some other problem for not. डॉक्टर साहब उसमें दोनों इशू था. वन इशू वाज दैट कैपिटल और रेवेन्यू दोनों में कट हुआ, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रेवेन्यू कैपिटल में फंड मिला नहीं. जी 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 जी, वो एक इशू था. दूसरा, देयर हैव बीन सम प्रोसीजरल लैग. यस यस, वो केवीके के पार्ट पे या यूनिवर्सिटी के पार्ट पे, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मतलब इसको बहुत स्पीड अप करने की जरूरत है. अदरवाइज क्या होता है कि जाते जाते मार्च आ जाता है और हम लोग भी यहाँ पर भी परचेज नहीं कर पाते हैं जैम के तरह. तो अभी से इनका स्पीड अप ये कर दिया जाए कि हर हालत में दिसंबर तक सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लें और इसको परचेज करने के लिए. बहुत अच्छा सर आपका सजेशन है, इसको हम नोट कर रहे हैं और we are already on the job every day, in fact every alternate day. पर ये दो जो आईसीआर से था व्हीकल, एक अटारी जोधपुर के लिए था और एक और किसके लिए था? एक था केवल एक ही है सर आईसीआर अटारी के लिए.
और एक दूसरा दूसरा केवीके का था, वो जयपुर सेकंड केवीके है वो हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें एक इशू ये था कि उसका नंबर ऑफ किलोमीटर्स वाज लेस, बट वो ओके वो गाड़ी की कंडीशन ऐसी है कि उसका रिपेयर में करीब 2 लाख रुपए लग रहा था। जी जी जी। ऑन दैट बेसिस आईएमसी रिकमेंडेड कि ठीक है, इसकी जगह तो नई व्हीकल ले लो तो ज्यादा अच्छा है। तो दैट वाज अप्रूव्ड बाय आईसीआर आल्सो। तो उसमें वही फंड वाला इशू आ गया कि वो फंड था नहीं तो। अब इस फाइनेंशियल ईयर में इसको स्पीड अप करके बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। So next agenda is presentation by scientists of our institute about their research project activities and also some of the new initiatives they have taken. So one by one, who will be making? First presentation, Dr. P.P. Rohella. Dr. P.P. Rohella is senior most principal scientist at ATARI, Jodhpur, and he is having expertise in livestock production management. He is dealing with NICRA and Farmer First project so far, and many other activities. So, Dr. Rohella, please. Yes, sir. Slides. Share your presentation. Yes. Very good morning, Chairman IMC and honorable members of IMC. So am I audible? Yes, yes, very much. Yes. Here is my achievements for this 2023. I am this presenting one institute project, NICRA project and Farmer First project. Its institute project has been approved service impact assessment of climate resilient practices for improving animal performance. It's for duration for 3 years. It was started in April 2024 and date of completion is March 2027. Dr. Jangad is co-PI in this project. These are the objectives: to measure the effect of climate resilient practices on animal performance, document farmer perception towards use of climate resilient practices in animal management, and so we have these 5 collaborating centers: Bhadmer, Bharatpur, Junjunu, Jodhpur, and Sirsa. These are this technical program of this project. I have already presented. It has been approved by this IRC. These are this timeline of this project. Is the progress of the project. Survey, baseline survey on different livestock data management has been initiated in the selected villages, one NICRA and one NICRA villages, and it may be completed by end of March 2025. Survey visits, collection of data, report preparation will be started from April 25 and will be completed by March 26. This is about NICRA project. So in this project, we have 18 KVKs, 13 in Rajasthan and 5 from Haryana. These are the climate variabilities identified for these districts. Here these in a nutshell this year's achievements. Total 8,201 demonstrations were conducted and total number of farmers involved are 23,318. And we earned rupees 1.83 lakh from the CHC of these 18 centers from this NICRA KVKs. So these are this under NRM. We have this water positive interventions, in situ conservation, rainwater harvesting, and laser land leveling, resource conservation technologies, and summer deploying and hydrogel use. Soil and nutrient management, we have soil amendments based on nutrient application, green manuring, and crop residue based compost. So out of which we have this water economy range from 20 to 36%, nitrogen saving 20 to 28%, and yield improvement was 12 to 35%. Income augmentation was 16 to 38% here. So these are some of these scale-up technology under NRM we identified throughout this NICRA project, and we have some of this horizontal expansion also through State Department. Under crop module, sir, we have short duration varieties of cluster bean, pearl millet, cowpea, chickpea, JNG, basmati rice. And the drought tolerant varieties, these are different varieties of crops: barley, cluster bean, mung bean. Under moisture stress management in guar, SD3068 and Karnvanna. In terminal heat stress management in salinity tolerant,
barley, mustard, giraz, and wheat, RAS 4238 and DBW 187 and WH 1124. Out of this, sir, we have yield advantage and the slow duration varieties range from 20 to 32.5%. And the drought tolerant varieties was 18.7 to 42%. And moisture stress management in guar was 16 to 22%. And terminal heat stress management was 18 to 24. This crop module is continued with the intercropping system, green gram, MS421, and with per millet, integrated disease and pest management, and this crop diversification and low water requiring crops. Out of this, we have yield advantage about 18.3 to 36.5%. Integrated disease pest management, we had advantage of 16 to 37.4%. And in crop diversification, 20.4. रोहिला सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज एक जो इससे आप समराइज करना चाहते हो, व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे, वो बता दो. बाकी तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं. ठीक है. ओके सर. ओके. क्रॉप प्रोडक्शन मॉड्यूल से कौन सी क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी को आप एड्रेस कर रहे थे, वो आपको बता देना चाहिए इसमें कि विच वल्नरेबिलिटी यू हैव बीन एड्रेसिंग. ठीक है सर. फॉरवर्ड नहीं हो रही. Please continue. Please go ahead. Okay, Next. sir. These are this another scalable technologies, sir. We have already mentioned. Under livestock and fodder, sir, here this fodder banks, grain fodder, breed improvement. Go back one slide. One slide back. पीछे वाली, हाँ ये वाली. That's how I was wondering if you have any communication with the CSSRI as far as salinity tolerant wheat varieties and mustard are concerned. There are few more varieties they have developed in the last 2 years, and I think whatever is being currently promoted, let it go. But I think there is a need of putting some new varieties into the chain so that the variety these 210, 213 is have more than 12 years. Almost 10 to 12 years it has is going to lose its vigorosity, particularly for salinity into the changing climate and salinity nexus of Rajasthan or the that Haryana geography. आपको कुछ नई वैरायटी को केवीकेज के माध्यम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए. ये मेरा रिक्वेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है क्योंकि किसान लिसन टू चिकपी में भी जीएनजी बहुत सर थोड़ा सा सुन लीजिए. area coverage under mustard and wheat, if you calculate Rajasthan itself alone, is significantly higher than whatever. But जो चिकपी की आप बात कर रहे हो, that may be of IIPR कानपुर की वैरायटी कोई होगी, उसका मुझे नॉलेज नहीं उतना. बट करनाल के पास तो कोई चिकपी की वैरायटी अभी फिलहाल नहीं है बहुत अच्छी जो वाइबल, वो पुराना हो गया, उसकी हम बात नहीं करते. आप नई वैरायटी गेहूं की आई हैं लेटेस्ट 2 years के अंदर, और मस्टर्ड की भी आई हैं. कुछ ही केवीके में मे बी 10-5 केवीके को कुछ सैंपल इस बार ट्राई करिए, मिल जाता है 2-2 केजी 4-4 केजी, तो आप लगवा करके चेन में लाइए और फिर कुछ किसानों को प्रमोट करवाइए, फिर अपने आप रिप्लिकेट हो जाएगी. क्योंकि ये एक ऐसा इनपुट है जो क्रिटिकल इनपुट है आपके क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को हिट करने के लिए, एनआरएम को, ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. सो दिस इज माय ऐड करवा देंगे सर इसमें. यस सर. थैंक यू सर. ओके, प्लीज गो अहेड. Livestock and this fodder production, sir. We have this fodder banks, grain fodder, and this breed improvement program of Mura and Thar Parker bulls, Jamnapari and Siroi bucks. Deworming in this livestock, animal health camps are organized, and feed management, mitigate mineral deficiencies, backyard port units have been developed. Sir, yesterday we had one IMC meeting with our director. So he has given very good suggestion about this livestock. We shall add this grain feed to this livestock, which is developed by NIAP Bangalore, which is Haridhara. So next time onward we shall add it. Okay. These are the scaling technologies which I have mentioned. These are the interventions. This under we have 18 CFCs each KVK, and sir we earned 1.83 lakh from this revenue. Could you please go back to the previous slide? Yes, sir. That's all. Could you please let me know what is the overall status and performance? It's not, we are not examining you. We are trying to learn so that we can replicate your idea with other stakeholders. Point number 6, establishment of feed and fodder banks की क्या पोजीशन अभी है ओवरऑल पूरे हमारे 28 के जो भी गांव हैं इसमें अडॉप्टेड है या जहां पर कर रहे हैं, क्या है सिचुएशन?
सर जो हाँ adopted ससुराल। villages, जो अडोप्टेड विलेजेस सर में जो VCRMC है उसके थ्रू हमने सर फीड फॉरवर्ड बैंक डेवलप किए। कितने ऐसे फीड ऑफ ऑर्डर बैंक है हमारे? मैंने सर इसमें यूनिट दिखाए थे अभी 88 हैं सर। और इसमें कोई ऐसे हैं जो 5 साल से पुराने हैं या सब अभी लेटेस्ट हैं? यस सर, यस सर, यस सर, 5 ईयर से ओल्ड भी होंगे ना? यस सर। वो जो एक बार शुरू हुआ था सर हमारा 2011 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, और उसमें 7 केवी के पुराने थे, वो अभी भी हैं सर। उसमें 2 नहीं है, 5 पुराने हैं। तो इसमें 5 तो मतलब 10 साल से ज्यादा पुराने। डॉक्टर साहब, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी ऑफ मतलब फॉर माय क्यूरियोसिटी, यस आप इसको जो ये देखिए बैकबोन है एनिमल का कंपोनेंट राजस्थान के लिए कम से कम, हरियाणा Right. के लिए भी है बट राजस्थान के लिए तो ज्यादा ही है, क्योंकि ये प्रीमियम और इंश्योरेंस का काम करता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्राउट, काल महाकाल जो 2 आते हैं इनके। जी ये जो 5 साल से पुराने हो चुके हैं आपके सीड बैंक फॉडर बैंक, क्या कुछ इसकी एक एनालिसिस आप कर सकते हैं? डेटा आपके पास है कुछ? यस सर, बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। फिलहाल तो मैं डिटेल उसको आपको गाइड कर दूंगा जितना मेरे को ध्यान है उस मैटर पे। ये देखिए, बनाने का इसका वेरी बेसिक पर्पज ये था कि एनिमल को के रिस्क को ईयर द राउंड जो फीड एंड फॉडर है उससे रिलेटेड जो हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं या मिल्क का प्रोडक्शन घट रहा है, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल ये इनोवेशन इंस्टीट्यूशनल है। राइट इस सर। फिजिकल टास्क पे मत जाइए, इससे क्या मेटलाइज हुआ पर मत जाइए, इसने कैसे रोल प्ले किया रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वो अब इसकी मेन साइंस है। ओके सर। सोशल साइंस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ बैठ जाएं, इस डेटा को देखें कि जो 5 साल से पुराने हैं वो बेंचमार्क बनाइए, 5 साल से नीचे मत लीजिएगा। अगर वो 50 भी आते हैं, जी 60 भी आते हैं, कोई इतना भी नंबर काफी हमारे पास है, उनका डेटा एनालिसिस करिए, तरीके से फ्रेम में लाइए, और इसको पॉलिसी इनसाइट बहुत अच्छी से आ सकती है, बहुत बढ़िया आ सकती है। इस पे फोकस करिए, और मुझे प्लीज 6 मंथ में इसमें से मुझे कुछ चाहिए आपसे। डेफिनेटली सर। आपसे चाहिए खासतौर से एनिमल साइंस, लीडिंग आपकी होगी, सपोर्ट हमारे सोशल साइंस के लोगों का होगा। ओके सर, ओके, आई प्लीज करिए। थैंक यू सर। Sir, these are the custom hiring centers, and we have different number of these instruments under these CSCs. And last year we earned 1.8 lakh revenue from these centers. हेलो, This is capacity development extension activities. मैडम आपने बताया ना, तो हम 2 से 4 के बीच में 7 training courses are conducted involving 3,039 farmers. Extension activities 345 and involved 1192 farmers. So now this is about the Farm First program. Under ATARI, there are 10 ICR institutes and 2 SAUs, 1 consortia team of 4 institutes, ISRI, NCAP, TACMA, and NOW. These are the major objective of this Farm First program. You also well know, sir. This is achievements of this 23, total 969 technical interventions were conducted and involving 25,448 farmers and 34 adopted villages. Now, the center-wise significant achievements of the FFP centers we have. This is about IR New Delhi, the economic impact of paddy variety PB 1718. This performance was very good, and this increase in net in was 17%, and cost of cultivation in 2,500 per hectare. About AU Jodhpur is a very good model of integrated farming system developed by AU Jodhpur, and this economics has also been calculated for this. There are different components under this. What has been found: said net house, farms, dairy unit, and marigold cultivation. These are this area and income before and after the adoption of the IFS. Could you please let me know last when was the last review of Farmer First project with our partners? Sir, last year I visited. Last year. What? Yes, sir. So this year's Farmer First review is going to be held, or yes, that is completed, sir, in July. September they completed. Okay. Some center has been dropped, or still all are continuing? Yes, sir. Two centers have been dropped, sir. CCHO Hisar and CIRB Hisar. Okay. Chaliye, please. Budget constraint is there, and some of the other points are also there. You know, I think we discussed that also. Okay. Chaliye. Sir, Kadri Jodhpur under crop diversification, this Gorla bear variety sir is doing very well, and this some of the farmers, more than this 22 farmers, 4 villages have adopted this bear cultivation. They are earning very good income from this. This CSRI is animal based. The Patanwadi, this ram is
giving very good results. For body weight about 17.18 kg in comparison to local, and the body weight price increased 15.92%. And the average crop strength 55 farmers out of which there are 35 lambs, and they are earning 40,000 per annum from this local paternity breed. The CHA bed planting technique in wheat has been found very successful, and the results showed this there was an increase in yield, 47.55 quintal per hectare in comparison to 46.3, and the net return was 45,972 per hectare. And this additionally, this technique showed irrigation water 40 to 45%. That's why is there any newness on this wet planting technique, or otherwise I think it is very old. Have they further refined in this, or it is the same one which we have seen 10 years, 15 years back? It is the same, I think. Okay. Subsistence dynamics, sir. I think you are from, we have been from this institute very well know about it. This reclaimed feed using SSD technique has been found successful, though I forgot to mention the total area that was reclaimed. And this farmers adopted this technique, and about there were 1.892 lakh per year from reclaimed area. This revenue was. So last year I also visited this CSRI in adopted village. This from NDRI, they have developed a state-based mesh strategy because mesh strategy is main problem with livestock, and they have developed this technique, and it has been found that 45% cows and 25% buffaloes were having this problem. So this. Please just 1 minute. Since our body director is sitting before us, I would request. After one very good, very classical scientific work has been done by NDRI Karnal, social scientist. I can name the guy. His name is Dr. Sanjeet Mathi. Okay. Dr. Sanjeet Mathi has conducted one project, completed one project on how the agro advisory on climate, about the weather pattern or of 1 week, what is going to happen, particularly during the this sunstroke or the summer season. They have analyzed, and they came very interesting with one finding that indicates that if the proper advisory is given to the farmers of dairy, particularly of south part of Haryana, because you are from the animal science, that's why I am sitting with you, is very important. And that finding said, after quantification of putting the models, that if the advisory was followed by the farmers of those regions of south part, Haryana, Hisar and all that area, it has saved 500 milliliter this milk per day. It means animal was protected from the shock, which could maintain the efficiency of 500 milliliter per day. So you can calculate the monthly total amount of milk was, that maintained or saved. So then further you can convert it into the economic return, and you can imagine. My here submission is not that what he has reported. My submission is that since ATARI is working on the similar dimensions, many people on animal science, and you are the very senior person in that, and KVK people have already been doing, and our JP Misra ji has already documented one technical bulletin that is very interesting. Why not have such kind of study? Maybe आप small sample पे ही करिए, कोई जरूरी नहीं कि बहुत 100-200 जिले लीजिए और 1000 किसान लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. 60 या 80 या 200 किसान का सैंपल ले लीजिए, छोटी सी स्टडी है, 4-6 महीने में कर लीजिए, पर्टिकुलरली राजस्थान के इलाके में, खासतौर से राजस्थान के इलाके में, और ये काल लेके आइए कि किस तरीके से वनरेबिलिटी को, रिस्क को हमारी जो एडवाइजरी है, एग्रो एडवाइजरी जो दी जाती है या दी जाती रही है, हालांकि अब दामू बंद हो गया, फिर भी हम दे रहे हैं, तो कैसे ये किसान के उसको सेव करती है, ड्रजरी को भी कैसे रिड्यूस करती है. क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि कल लू ज्यादा होने वाली है, टेम्परेचर ज्यादा होने वाला, तो हो सकता है कि मेरा माइग्रेशन पैटर्न शिप के साथ या एनिमल के साथ कुछ और होगा, या मैं कुछ और करूंगा. इस तरीके का चीज लेकर के आइए. और ये आपके अटारी की बहुत एक की एरिया है जिसमें कि हमें अभी तक उतनी अच्छी लीड ले नहीं पाए हम लोग. हमारी दिक्कत रही, हो सकता है उतना हमारा गाइडेंस प्रॉपर नहीं रहा हो, हमारी भी प्रॉब्लम होनी है, हर चीज आप पर हम नहीं कर सकते. तो इसको मैं कह रहा हूं कि इसको ध्यान रखिए, जरूर लेकर के आइए. वो डेटा आपके पास ऑलरेडी है, आप लोगों ने जो छापा हुआ बुलेटिन में, नॉट सेम पैटर्न, बट इस फ्लेवर को कैसे निकाला जाए. खासतौर से राजस्थान का सैंपल लीजिए, हरियाणा को छोड़ दीजिए, पंजाब को छोड़ दीजिए, और बाकी जो चीजें छोड़ दीजिए. 50-60 KV के लीजिए,
आपको हेल्प चाहिए प्रॉपर उसकी ग्रूमिंग कैसे करनी है, कैसे फ्रेमवर्क बनेगा, कैसे डेटा आएगा, तो मैं 1-2 दिन के लिए उसको या तो ऑनलाइन जोड़ दूंगा लड़के को, सीनियर साइंटिस्ट अभी हूँ, या कहोगे तो आपके रिक्वेस्ट पर मैं वहां उसको भेज दूंगा 2 दिन के लिए। दो ठीक दिन है के सर। लिए बैठा के ट्रेंड हो जाइए, आप लोग अच्छे से हो जाइए, ए से वी लेके शैल डू, वी दैट शैल विल डू। बी आप योर सिग्निफिकेंट आउटकम, बता रहा हूँ। ऑलरेडी ओके, कुछ सब कुछ हुआ पड़ा, कुछ भी नया नहीं करना है आपको, ठीक है सर, थैंक यू सर। वो चीज लाइए इसमें, चलिए। ओके सर। So these are publications, research paper 2, popular articles 3, abstract 8, and two book chapters. That's all, sir. Thank you so much. डॉक्टर साहब जो जो टोटल पब्लिकेशन है 2 नंबर, ये 1 साल के है ना? Yes, sir. ठीक, एक साल। ओके। Dr. Saab, in farmer first project, is there any ICT interventions included in the projects in the form of some video, audio, and Yes, sir. Yes, sir. social media coverage? Yes, sir. There Because are, this sir, is a very good videos about project this. given by the ICR. Its Yeah. impact is very good. We can say that a very good project. So I think it should be popularized through social media and other ICT tools. Sir, this successful videos of the success stories of the each center have been uploaded on the Farm First portal itself. Okay, okay. डॉक्टर गोयला जी, एक और हमने साथ ईमेल भेजा था, आपको याद होगा शायद, या जहांगीर साहब बैठे हुए हैं शायद याद होगा, हमारे डीएम साहब का एक ईमेल भेजा गया था टू ऑल अटारी, नॉट ओनली टू यू। फार्मर फर्स्ट के जो सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन हुए हैं, या टेक्नोलॉजी आईसीआर ने अप्रूव की है, या दूसरे जो जिसको कि डकमा हमने को कम्युनिकेट किया डॉक्टर साहब, हमने डकमा को कम्युनिकेट किया डॉक्टर साहब। भेज दिया है, कब भेजा? यस सर, यस सर, सब सेंटर को भेजा सर। हाँ, सब सेंटर्स का भेजा हुआ सर, डकमा को भेज दिया, ठीक है फिर। डॉक्टर डीआर मिश्रा साहब को थोड़ा सा और इन्फॉर्म करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो कंसोर्सिया टीम है ना, चार इंस्टीट्यूट, जी जी, याप, नार्म, डीकेएमए और आईएसआरआई। यस आईएसआरआई का जो आपने कहा ना कि आईसीटी इंटरवेंशन, जी, ISRI was roped in just to infuse and augment the ICT intervention. okay, जो भी सक्सेस स्टोरीज है, या इवन ए डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर फार्मर फर्स्ट, yeah, उसको कंस्ट्रक्ट करना और उसको रेगुलरली अपडेट और मैनेज करना। तो ठीक, ISRI में एक ऑलरेडी एक पीआई है, हम्म, प्रिंसिपल साइंटिस्ट लेवल पे, ही इज लुकिंग आफ्टर इट। डीकेएमए ने पूरा इसको सिंथेसाइज किया हुआ है। जी, Last 7 years, the best success stories out of FFP, they have already been synthesized, and very soon you will get a very good publication out of these. और जो आप कह रहे हैं ना, इसके तमाम वीडियोस, वो भी एक कंपाइलेशन डीकेएमए के पार्ट पे किया जा रहा है, तो आपको जल्दी ठीक है सर, थैंक यू। I will share all those details with you. ठीक है? ओके, थैंक यू। So next is Dr. Jahangir. डॉक्टर साहब इसको आंसर करके दूसरा लगा दो। Dr. MS Meena. Yes, sir. I am audible, sir? Yes, right. Very good afternoon to all of you, respected IMC chairman and members. I am Dr. MS Meena. I am working as a principal scientist at ICR ATARI Jodhpur since 2013. Sir, these are the research projects and schemes in which I am engaged. Under the research project, recently we have completed 2 research projects in the networking mode. I worked as a co-PI on the ARIA and cluster frontline demonstration on pulses. And this time I have presented a national priority project under seed system innovation. Then I will present later on. And I'm also engaged in the scheme CFLDs on pulses, oil seed, pulses seed hub, ARIA, FPOs, and skill development. These are the institution building activities. I am also acting as a HRD nodal officer for Krishi portal, transparency officer, and also engaged with monitoring, coordination, and many other works as assigned by the authority.
And I'm also engaged with the teaching, sir, since we are accredited with the Agriculture University Jodhpur. So I'm taking one MBA course at the university, and I'm also guiding one student of MSc in the university and two student MBA students. So these are the three projects. Two have already completed, and finally the perceived stresses and access to institutional innovation or seed system and grassroots insights from northwestern India. This project I have presented, but this is for honorable members of the committee on suggestions. Sir, this institute is working as a lead institute with the ICR headquarters, National Institute of Agriculture Economics and Policy Research, New Delhi, and the 10 Krishi Vigyan Kendra who are having the seed hub project in Rajasthan and Haryana. They are also partners for this study. On the basis of the review of literature and work, we have made hypothesis that farmers' perception on the multiple stresses significantly have impact in their decisions regarding the pulses seed hubs and the varietal choices they are growing in their areas. Secondly, the access to institutional innovation on the seed system, that is networks, it enhances the farmer's adaptive capacity against multiple stresses, and that is leading to the improved the resilience and the pulse productivity. Thirdly, the economic benefits, whatever derived from the quality seed production through these seed hubs, this is the positively correlated with the varietal replacement rate and the seed distribution pattern among the farming community. And finally, this seed-based institutional innovations is significantly influence our policy frameworks, and finally leading to more sustainable seed system that support farmers' adaptation to the environmental and economic challenges. We have formulated with the help of our all the co-PIs, the understanding what are the farmers' perception on the multiple stresses impacting pulse seed system, and unraveling the institutional innovation on seed system that is assessed by the farmers that enable their crops or adaptation against the multiple stresses, measuring the economic benefits, varietal replacement rate, and the seed distribution pattern. And finally, navigating the policy implication of seed-based institutional innovation that influencing the sustainable seed system. Since we have established many seed hubs since 2016-17, but still we are deficit about 56% of the seed production due to this multiple stresses. So under this project, sir, this study will be conducted in Rajasthan, Haryana, both the states, because we are having 10 seed hubs. So we have selected it purposively, and all the seed hubs in Rajasthan and Haryana also selected for this purpose. And we are producing the seed in the partnership with the 211 partner farmers. So we have included all, because individual case is very peculiar in the seed production in these states. There are different agroclimatic situations, and situations are also different. So we have also tried to take one farmer for each to making the with and without method for the employment of assessing the differences in these. And suitable advanced statistics techniques are to be employed. And I have contacted, sir, whatever suggestions have been received this time from Honorable DDG and members. So Dr. Nikam from NIAP, I am with the consultation with him for refining these variables and other things. These are the variables, socioeconomic variables we have taken. The perception on the multiple stresses, biotic, abiotic, salinity, stress, temperature, season, chemicals, whatever it is. And seed system access, that is formal, informal, and the integration of both the seed system. These are some coping mechanism, maybe different, the adoption of drought, water, disease, stress, and other crop varieties. Either early sowing, adjusting in the sowing time, growing short duration, shifting the season, whatever the coping mechanism they are adopting for this. The net return of the farmers as well as KVK, this is the economic benefits, varietal replacement rate, and seed distribution pattern
KVKs to farmer or to the other KVKs or NSCs nearby market, other farmers or the farmer shaped seed use, and seed based institutional innovation. This is input, process, and output and outcomes level, all the level. This is the functional model, but we'll try for a plausible model for this seed production. We have some expected outcome of this project, some policy document for KVK based innovative seed production and the multiplication system for the pulses, and need based redesigning the existing seed hub model, plugging the gaps in the process and the product, the lifting and price realization. This is also one of the important factors, both at the KVK as well as the partner farmers level. And whatever the economic benefits and varietal replacement, other output will be there. Sir, I'm also handling this creation of seed hub for the increasing the indigenous production of the pulses, with the objective, very clear-cut objective, to ensure the supply of quality seed and maintaining the sustainability. So till date, we have established seed hub at all the centers in Rajasthan and Haryana, allocated 1.5 crores for each seed hub. So we have invested about 15 crores for the seed hub, and we have involved. This is 211 in place of 411, and we have. Dr. Minaji, I was just trying to understand what is the meaning of indigenous production of pulses. Those farmers' preferred varieties, sir. Okay, locally suitable and available जो है वो. तो क्राइटेरिया सर कुछ भी हो, लेकिन किसान को जो पसंद है, दाना मोटा है, शाइनिंग है या मार्केट ज्यादा है, वो जो प्रोडक्शन करना है उसको इंक्रीज करना है. इंडिजिनस, आई डोंट नो, ये टाइटल थोड़ा सा टाइटल देख लीजिए. मतलब आपने अडॉप्ट किया है या ऑलरेडी? ये सर मुझे लगता है कि IAPR जो पल्सेस सीड सेंटर बने हुए वहां से ये टाइटल आया. इट्स अप्रूव्ड बाय द ICAR, सो इट्स वेरी एस्टैब्लिश्ड टाइटल. ये सर वहीं से आया. मैंने ऑफ द सीड हब फॉर इंक्रीजिंग दिस. कोई बात नहीं डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाह रहा था कि आपका जो 10 पल्स सीड हब सेंटर्स बनाए गए हैं इंक्लूडिंग इन हरियाणा एंड राजस्थान, जी, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि IAPR कानपुर ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है पल्सेस सीड हब पोर्टल. जी जी. हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाएंगे तो पल्सेस सीड हब पोर्टल लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करके और उसका सारा कुछ देख सकते हैं. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो आप 10 पल्सेस सीड हब सेंटर बने हुए हैं, जो आपके माध्यम से इसका सारा कुछ हो रहा है, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इस पल्सेस सीड हब पोर्टल में जो प्रोडक्शन का डेटा है, सेल्स का डेटा है, वो जरूर अपडेट करते रहें, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सीड्स एज फार एज द वेराइटी इज कंसर्न, सारी चीजें हमारे फार्मर्स को वन स्टॉक में मिल सकती हैं. और कोई भी फार्मर ये देख सकता है कि हमारा पर्टिकुलर केबीकेज पर कितनी वैरायटी, किस वैरायटी का कितना सीड अवेलेबल है, किस केबीके के पास सीड अवेलेबल है, उस केबीकेज के इंचार्ज का क्या नाम है, उसका ईमेल क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सो दैट फार्मर्स विल एक्सेस द पर्टिकुलर केबीकेज अबाउट द सीड. तो ये सारी चीजें जो है ना, जितना भी सीड हब सेंटर्स हैं, इनको जरूर सेंसिटाइज किया जाए. हम लोगों ने भी ट्रेनिंग दिया है, और ट्रेनिंग देने के बाद इस सीड हब पोर्टल में अपना डेटा को जरूर एंट्री करते रहें, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सीड्स जो है ना रियल टाइम बेसिस पे फार्मर्स को मिल सके. यही मेरा सजेशन है यहाँ पे. इसमें कोई भी दिक्कत हो रही हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट आवर नोडल अफसर डॉक्टर PK कटियार. और चूंकि इस पोर्टल बनाने में और सारी चीजें में हम लोग इन्वॉल्व हैं, और ये सारी चीजें तो कोई भी हम लोग कभी भी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू सर. सर करते भी हैं, और जितनी भी केवीके उनको हम एडवांस में सर्कुलेट करते हैं, और उनको ये भी कह रखा है कि आप केवीके से ही सीड लेंगे या बाहर से नहीं लेंगे जब तक अटारी की परमिशन नहीं होगी. तो जब तक एक्चुअली क्या है ना, जिस दिन सेल होता है उस दिन ही अपडेट करना है. अदरवाइज क्या है ना, जो सीड अवेलेबिलिटी रियल टाइम अपडेशन हो रहा है, तो रियल टाइम अपडेशन में फिर ये पता नहीं चलेगा कि किस केबीकेज के पास किस वैरायटी का सीड अवेलेबल है. पता चला प्रोडक्शन तो दिखा रहा, लेकिन अवेलेबिलिटी उतना प्रोडक्शन है उतना ही अवेलेबिलिटी शो करेगा. सेल दिखाना पड़ेगा तभी कुछ होता है. दूसरा, तो आप ये कह रहे हैं कि इतना एलोकेट हुआ है,
तो ये सारा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रिवॉल्विंग फंड के लिए सारे ऑप्शन दिए गए। इट शुड बी अपडेटेड टाइम टू टाइम। ठीक है सर, बिल्कुल होगा सर। थैंक तो यू। इससे सर अभी तक we have generated more than 31 crores till date. This is the revenue at the KVK level at from the seed hub. This is the total seed produced, and KVK wise, we have very less production in Bhiwani, Sirsa, or even some KVKs of the Rajasthan, because some of the KVKs are producing seed of only green gram. They are having the problems, and we are facing problem of high rainfall and drought also. So even they are planting crop as per targets 1,000 quintal per year, but we are facing some problem in the production. So we have achieved till date 44% of the total seed production. This is the KVK production. And Alwar and Ajmer, they are nearby. Others KVKs are facing some problems. We are working in the action research mode, sir. We are trying to facilitate in the getting the seed, this foundation seed and other facilitation we are doing. This is the last this year's progress KVK wise, and this is variety wise. Next, I am also handling cluster frontline demonstration on pulses. So this is the overall progress I have prepared here for 7 years, from 2015-16 to 24. Nearly 55,000 cluster frontline demonstrations were conducted in 25,000 hectare area. That's how we are able to read that. Just give us the key message. What is from this slide? Sir, we have introduced 11 varieties of chickpea, sir, new varieties, 5 varieties of motwin, 14 varieties of green gram, and 7 varieties of the black gram. Okay. And we have successfully introduced summer green gram in southeastern Rajasthan, specifically in Rajasthan, Savai Madhopur, Kota, Jhalawad, and Bundi district. So this कौन सी वैरायटी लिया हमारे ग्रीन ग्राम में? कौन सी वैरायटी लिया आपने जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राजस्थान के लिए? ये सर वैरायटी सारी है, आपका आईपीएम वाली भी है, आईपी ये सिखा है, विराट है ना? हाँ, 42 है। ठीक है। Dr. Misra, I would like to compliment IIPR. IPM सीरीज की जो वैरायटीज है ना, जो they are YMB free. यस सर, यस सर। मैंने विराट है सर, सम्राट है। एक्चुअली शॉर्ट ड्यूरेशन भी वैरायटी है, एक्स्ट्रा अर्ली भी है, और ये समर के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसके लिए तो है ही आपका जो है। There is a turnaround in मूंग बीन, especially in Rajasthan. Yes sir, yes sir. Few district 2013-14 तक एरिया और प्रोडक्टिविटी दोनों नीचे जा रहे थे, बट आफ्टर दीज वैरायटीज वर इंट्रोड्यूस्ड, एरिया हैज पिक्ड अप, प्रोडक्टिविटी हैज आल्सो गॉन अप. सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. ठीक है, थैंक यू. From this CFLD, sir, whatever we have produced the quality seed production, so 30% yield increase, 13 variety we have introduced, and highest record production of 9.83 kg per hectare of RMG variety. This is the developed Rajasthan variety, followed by the GM4, and we have shifted this Kharif to summer cultivation more than 600 hectare in these 5 districts, and cropping intensity have increased from 200 to 300%. Average yield we got more than 9 quintal per hectare in the summer season. Income augmented also, and total income from this cluster frontline demonstration is 447 lakhs of 7 years data. And as we have calculated the 66% seed kept by the farmers, so we have calculated on the basis of that. So we have covered 1.18 lakh hectare under the green gram. That is the 5% area under the Rajasthan total area of the green gram. We have also calculated the soil health improvement through nitrogen fixation. So 47.5 lakhs kg. We have saved the urea, and total this is costing around more than 5 crores
And if we take the as an indirect benefit, the subsidy, then it is the 45, more than 45 crores, because most of the subsidies are given by the government. So we have reduced the burden of the government about 45 crores. And from this capacity and extension activities, we have mobilized 50,000 farmers in these 7 years. We have also promoted through farmer to farmer extension in the 15 districts. We have mobilized 4,000 farmers, and we have covered through this approach more than 6,000 hectare area under the green gram production. So this is the latest year's data. This is the progress. Even still we are facing the problem of this high rainfall, so we are not getting good result, but we have minimized the yield gaps up to 4 quintal. And in case of, even we have also introduced the lentil in some KVKs. Savai Madhopur is the promising district where 30 years back it was cultivated, but due to wilt they have left it, and now we have introduced, and now it is gaining the momentum in the 2-3 districts. So this is the some field view of the Chittorgarh district of the black gram. We have come out with a publication based on the experience of this green gram as a potential of green gram in Rajasthan. Sir, we also got the IVSN number, and we are also working on black gram and mort bean crops for this type of the experiences we got from this zone. Sir, this is the CFLTs on oil seed. This is the total, but we have introduced 22 varieties of groundnut, 9 varieties of soybean, 1 variety of sesame, because we don't have much varieties of the sesame, only RT351. Now we also added 1 variety and 20 variety of the rapeseed and mustard. This have resulted up to 20,000 per hectare benefits, the net return from this. And it is spread up to 30 times. This is the latest year's data of the oil seed. This is the lentil in the Savai Madhopur district, as I have narrated. This is field day in soybean, field day on groundnut. This is the case of sesame variety. This is PM32 mustard in the Bundi district. I am also handling this, attracting and retaining youth in agriculture, this project. And from 16-17 to 24, 2 KVKs are involved in this, and from this nearly 129 training programs, nearly 3,000 rural youth have been trained in 9 enterprises. That is goat farming, poultry, beekeeping, all the I have already mentioned. And from this, 42% the rural youth have already established their units, and still they are functioning. More than 10 youth also obtained financial support from National Livestock Mission for more than 1 crore each. And we have prepared their DPR, KVKs as well as ATARI. We have facilitated them, and they are working well. This is the latest year data, because now we are not getting much fund except the salary of SRF for the reporting to the ICR. So only 4 training programs have been organized, and 35 entrepreneurial units have been established, and all 35s are in the functioning mode. This is a cluster-based business organization. Sir, in 6 districts, we have formulated 13 the farmer FPOs, but it is we could not get much benefit or means progress in this, because most of the commodity it is not in their areas. So somehow, as per instructions, we have come up to this level. I've also completed this RKVY recognition of prior learning, some training programs in the 5 Krishi Vigyan Kendras. These are some publication in 2024. I have 5 publications, then in 7 publication in 2023, and 1 popular article recently in Indian Farming of the mort bean cultivation. थोड़ा सा बैठ जाइएगा एक स्लाइड, लास्ट सेकंड स्लाइड. हाँ, इस पर रुकिए थोड़ा. नहीं ठीक है, चलो यही रहने दो.
ये कहाँ से निकलता है डॉक्टर साहब दिस जर्नल? कौन सा सर? इंटरनेशनल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। नहीं कहाँ ये तो यहीं का है सर, बाहर का नहीं। नहीं मतलब इसका रांची से है सर। झांसी से है? रांची रांची। अच्छा अच्छा, ये बाहर का नहीं है। जर्नल ऑफ रिसर्च, ठीक है चलिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज डॉक्टर एच.एन. मीना। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ मेरा सजेशन है, सजेशन ही ले जी जी लीजिएगा। जी सर। आपका जो प्रोग्राम, आई थिंक इज इट ओके इफ आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश मिला के? कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी जो जैसे मर्जी। तो मुझे लगता है सभी हिंदी भाषी हैं, देयर इज नॉट इशू। तो आपका जो बहुत ही की प्रोग्राम आप देख रहे हैं एज ए साइंटिस्ट, आप आर्या देख रहे हैं, आप CFLD बहुत ही कोर एरिया को आप हैंडल कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब ये कि एज यू आर गोइंग टू मेटलाइज वन प्रोडक्ट दैट इज पब्लिकेशन अ बुक, उसी स्टाइल में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आर्या का जो आप कह रहे हैं कि अभी तक यूनिट अभी सस्टेन कर रही है जो भी और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो डेटा आपके पास रेप्लिकेटेड फॉर्म में है तो क्यों नहीं आप भी उसी पैटर्न पे एक पब्लिकेशन तैयार करिए, जैसा कि चंद्रगौड़ा जी ने भी एक निकाला है, अच्छे जर्नल में छपा है, करेंगे उसका एक बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, और जो उसमें एनालिसिस की हेल्प होगी तमाम स्टैटिस्टिशियंस से किसी से बोल देंगे, वो हेल्प कर देंगे आप। दूसरी चीज ये है कि जो पल्सेस का जो आपके पास डेटा है, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जो डेटा ऑलरेडी तैयार हो गया, जैसे आपने दिखाया कि नाइट्रोजन इतनी सेविंग हमने कर दी, यूरिया इतना बचा दिया। डॉक्टर साहब अगर आप केवल नाइट्रोजन यूरिया के ही डायनेमिक्स पर 3 वेरिएबल ले लीजिए, वाई के तौर पर ले लीजिए चाहे एक्स के तौर पर ले लीजिए, जो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा डेटा सेट आपके पास है, उसी पर केवल आप एक पब्लिकेशन एक अगर निकाल दें, रिसर्च आर्टिकल निकाल दें, या मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी पर्सपेक्टिव से निकलते हैं कई जर्नल सेक्शन निकालते हैं। डॉक्टर मिश्रा साहब हमारे यहाँ बैठे हैं एंड ही इज वेरी यू नो दैट हैविंग द रिच एक्सपीरियंस हाउ टू आर्टिकुलेट द आर्टिकल्स ऑन सच काइंड ऑफ डेटा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने सिंथेसाइज करना है कि ये CFLD अगर ना रहे होते तो कितना ज्यादा आप वहां पर लॉस कर रहे होते यूरिया डाल करके, चाहे नाइट्रोजन को एडिशनल के तौर पे, या अगर दूसरा इसका अगर आप डायमेंशन देखें कि अगर वो FLD के थ्रू पल्सेस अगर वहां नहीं रहे होते तो उस पूरे क्रॉपिंग सिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन का कौन सा एलिमेंट कितने पीरियड के लिए मिस कर रहा होता, और मिस कर रहा होता तो रिस्क के टर्म में, इसको नोट करिए, रिस्क के टर्म में कितना हम वनरेबल हुए रहते। इसको ज्यादा क्वालिटेटिव की ही जरूरत है, क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव को देखते हुए, ज्यादा नहीं, 7 से 8 या 10 पेज का अगर आप तैयार कर लें एनालिटिकल उसमें डाल करके, तो ये बहुत अच्छे जर्नल में पॉलिसी इंसाइट के तौर पे जा सकता है। आपकी भी हेल्प तो लगेगी। उसमें स्टैट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज से और उससे केजी और उससे बात बन जाएगी। इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी और पूरी टीम, लेकिन अल्टीमेटली उसको तो जो अमली जामा पहनाएंगे मिश्रा जी से ही होगा, मुझे पता है। आप लोग लेकिन उस तरीके का लेवल का बना के मिश्रा जी के टेबल पे फ्लोट करोगे, ये आपकी ड्यूटी में दे रहा हूँ, और मुझे चाहिए 6 महीने के अंदर ये आपका ATARI, ये सबसे मजबूत कंपोनेंट है ये CFLD का, और ये पल्सेस का, और स्टेट भी बहुत बड़ा है, और आपने नए इंटरवेंशन किए हैं, कुछ एरिया बढ़ा भी है, 4-5 जिले बढ़े हैं, नई क्रॉप और नई वैरायटी जिस पर IPM की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी कि अगर पल्स का वैरायटी मजबूत है और एरिया एक्सपेंड हो रहा है तो कौन कौन से वनरेबिलिटी को आप एड्रेस कर रहे हो, क्योंकि पल्स को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, वहीं पर कोई दूसरी क्रॉप इंट्रोड्यूस करोगे तो ग्राउंड वाटर आप लिफ्ट करोगे, एनर्जी की वनरेबिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आपकी क्लाइमेट के प्रति आपका शॉक की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इस तरीके का फ्लेवर ऐड चाहिए हमें, तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग उनको करके दीजिए, तब इसके बाद ये उसको फ्रेम कर देंगे। ज्यादा नहीं 10-12 पेज का है। ATARI की विजिबिलिटी उस ऐसे चीजों से आनी है, आएगी। हाई रॉकेट साइंस की जरूरत, उसमें डेटा स्टैटिस्टिक्स मॉडलिंग की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आ जाएगा ये। ठीक है, इसको नोट करिए, करना। सर इसमें प्रेजेंटेशन में टारगेट और अचीवमेंट में बहुत ज्यादा गैप, जैसे 500 नंबर है वहाँ 15 हुआ है, बहुत ज्यादा टारगेट और अचीवमेंट में गैप बहुत। आई थिंक आई विल ऑन बिहाफ ऑफ ATARI जोधपुर। आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं CFLD में, किस में बात कर रहे हैं?
अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया था CFLD के पहले जो डिमॉन्स्ट्रेशन थे और समझ FLD। गया नहीं डॉक्टर साहब, हाँ उसमें वो इशू को मेरे से साथ कोई नहीं जानेगा, ये क्या जवाब देंगे? वो यहाँ पे मैं रिप्लाई दे रहा तो हूँ। ये सीडअप सेंटर में भी होगा ना कि 1000 कुंटल का टारगेट देते हैं हर एक केवीकेज को, तो उसमें भी डेफिसिट होगा, बिकॉज देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स देयर। नहीं साहब, नॉट डेफिसिट, ओनली दैट, अरे नॉट ओनली ज्यादा दैट, गैप है, ज्यादा गैप है। देर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज जो कि इनके हाथ में नहीं है। नहीं है। ये वो स्ट्रक्चरल इश्यूज DFW के पार्ट पे है, इसलिए इतना बड़ा लार्ज गैप आया है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से अभी तक कमिटेड लायबिलिटी का पेमेंट हुआ ही नहीं है। तो क्रेडिट के आधार पे टारगेट को अचीव करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो गैप ज्यादा दिख रहा होगा, खासतौर से रिसेंट टाइम में। चलिए डॉक्टर साहब नेक्स्ट। थैंक यू। Next is Dr. Meena HN. Dr. HN Meena, यस सर। जल्दी करो। डॉक्टर HN Meena, आप क्विकली कर लो। हाँ, केवल की मैसेज वीडियो बंद करो। Significant slide में what message you want to convey the way. Okay, okay, sir. Honorable Chairman and member of IMC and dear friends, good afternoon to all. I am Dr. HN Meena, Principal Scientist Agronomy. कहाँ से बढ़ेगा ये? नहीं बढ़ रहा यार, ये बढ़ Sir, presently I am handling these 5 projects, four sponsored projects and 1 institute project, sir. First project is CRM project. These are the objective of this project, sir. Protecting in situ management, then protecting environment from air pollution and preventing loss of nutrient and soil microorganisms, and creating the IEC activity among the stakeholders through the IEC activities. These are the major component of this project. First one is procure the चलिए agriculture. बता सकते स्टेक होल्डर्स पता, आगे चलिए। Sir, these are the activity conducted during 2003, 2004. These are the awareness activity, training, demonstration, mobilization, school Kisan Mela, exposure visit, and these are the numbers of activity and number of participants of the farmers, sir. Now, these are the fire counts since 2019 to 2023, sir. So there are significant reduction observed in the fire counts, sir. But still, maximum fire counts were recorded in Kaithal, Karnal, Kurukshetra, and the Fatehwad, sir. And this is the overall figure of Haryana, sir. In 2019, more than 3,000 fire counts are observed. Then it reduced. Then again in 2021, due to farmer protest, it again increased, then reduced, and sir, in last year it remains only 743, sir. Then this graph shows the, sir, burning free villages in the all the district of the Haryana. Sir, this red color shows the total number of villages. This blue color shows the burning free villages in all the districts of the Haryana, sir. Then this is the crop incorporation area in percentage, sir, in all the districts. So maximum incorporation was observed in this is Bihani, Jajjar, and sir Panipat, and minimum in Ambala and Karnal, sir. And this is the yield and economics of this CRF project, sir. Maximum yield observed in happy seeder, followed by this super seeder, then zero tillage as compared to the check, sir. And in case of the cost of cultivation, minimum cost of cultivation recorded in zero tillage, followed by this happy seeder, then super seeder as compared to the check, sir. Then this is the next project, Damu project. These are the objectives. Sir, in first phase, it is established in 16 kV gauge. Out of these, 9 in Rajasthan, 6 in Haryana, and 1 in Delhi. And in second phase, 10 in Rajasthan and 8 in Haryana, sir. This is and sir, this is the its Damu and its network, how it is works, sir. The advisory came from the IMD to RMC, then it came to Damu unit, then advisory panel prepared bulletin and disseminate via these media to the farmers, sir. Sir, we have conducted one study in last year in for kharif crops with the respondent of adopter more than 600 and non-adopter more than 500. With these crops, sir, black gram, cluster bean, cotton, green,
gram, and these are the results of yield and net return and the BC ratio. Sir, those farmer adopting agro-advisory services for the significantly higher yield as compared to the non-adopter, or sir, in this case, the maximum benefit observed in this system, then the green gram, followed by the CCM. Similarly, in case of the net return, sir, and BC ratio also observed. And this is for the similarly the Rabi crops with adopters more than 4,000 and 400, and non-adopter also 400 with these crops: barley, chickpea, isabgol, mustard, and wheat. And here also significantly higher yield advantage was observed in case of the agro-advisory adopter as compared to the non-adopter, and return and BC ratio were also observed higher in adopter cases. And this tables were the loss of income to non-adopter as compared to the adopter, sir. So those farmers are not adopting, they got loss around this percentage. And side by this, the gain income to adopter as compared to the non-adopter. Sir, this is the gain in the yield. Those are adopting the agro-advisory services in these crops. Similarly, this is for the Rabi crops, sir. And this is the saving inputs and risk aversion to adopters in different kharif crops, sir. The maximum input are saving in this cotton, sir, more than 10,000, then rice 7,000, and green gram 8,000. And this is the risk aversion in case of the yield, sir. In percentage, maximum risk aversion in sir, cotton 37%, then green gram 32%. And this is the similarly in case of the Rabi crops, sir, in barley, wheat, chickpea, mustard, and the isabgol. And these are the activities conducted during this last year, sir. Agro advisory, farmer awareness program, and farmer scientific interface interaction meetings. And sir, this is the outscaling natural farming project. This is initiated in 2022, and it is implemented in 38 KVKs. Out of this, 19 in Rajasthan and 18 in Haryana and 1 in Delhi, sir. So these are the training programs organized during last year. 80 out of which 44 in Rajasthan, Haryana, and Delhi 1. And this is the awareness program. More than 800 awareness program are organized, and total more than 50,000 farmers are participating in this awareness program. And more than 400 demos were conducted during the last year, sir, in Rajasthan, Haryana, and Delhi. So this is the yield and the cost of cultivation. So in natural farming, the yield is recorded lower as compared to the conventional practices, except this in cumin. In cumin crop, there is a little higher yield was recorded as compared to the conventional practices. But in case of the cost of cultivation, the lower cost of cultivation was recorded as compared to the conventional practices. डॉक्टर मीना जी, हाँ सर, आपका सवाल है ना, सब्जेक्ट एग्रोनॉमी सर, एग्रोनॉमी है ना? हाँ जी। आपको कुछ ऐसी इंसाइट मिली नेचुरल फार्मिंग में कि जहाँ नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और जिसमें ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं कि नहीं ये इनपुट डालना है नेचुरल फार्मिंग के लिए, और जिसमें नहीं डालना है, सवाल में कुछ का सैंपल लिया है, कुछ ऑब्जर्वेशन हुए हैं क्या केवीके से? सर एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मेरे पास इसी अभी आया है, तो अब मैं इस साल से ये करने की सोच रहा हूँ, करने की कोशिश करूंगा सर। मैं पहले राजनारायण जी के पास था सर। ये है कि बीइंग एग्रोनॉमिस्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हम उसके साथ थोड़ा सा जस्टिस करते हुए कि किसान, सुन लीजिए, आपको कंप्लेन नहीं करना है, जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए पहले। हाँ ठीक है। जो डेटा चाहे किसान के यहाँ से लिए हो या केवीके के प्लॉट का डेटा भी अगर है, तो एक कुछ है उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव केवीकेज हैं जो कई सालों से कर रहे हैं। एक बेंचमार्क फिक्स कर लीजिए कि 3 ईयर से ज्यादा या 5 ईयर से ज्यादा, मिनिमम 3 ईयर से कम मत रखिएगा, से ज्यादा वाले से कुछ सैंपल ले लीजिए सॉइल के सैंपल लेने के बाद जो नेचुरल फार्मिंग का प्रिंसिपल है कि रिजिलियंस को मजबूत करना इन टर्म्स ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या है, किस तरीके से, और किस तरीके से कार्बन का रेट 3 साल में तो कुछ पता चलेगा नहीं। तो बेसिकली जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है और जो दूसरी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं अगर निकाल सकते हो,
और भी जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं 2-4 निकाल लोगे तो थोड़ा सा आपको एक क्लू मिलेगा कि नेचुरल फार्मिंग का इम्पैक्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फील्ड कहीं घट भी रही है 25 से 30% अगर, और उनको अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा लॉस शायद नहीं है, हम विन सिचुएशन में हो सकते हैं। तो बीइंग इकोनॉमिस्ट थोड़ा इसको सोचिएगा कि क्या ये संभव। तो कुछ सीजन अगले में 2-3 बार रिप्लिकेटेड फार्म में सैंपल लीजिए, नॉट ओनली ऑफ 1 सीजन बट एटलीस्ट 3 से 4 सीजन का जब सैंपल लोगे तो एक मीन वैल्यू आएगी, प्रॉपर एक कुछ रिसर्च डिजाइन लगा हुआ कि कुछ आपका स्टेटिस्टिकल एक रिगर तैयार होगा कोई स्टेटमेंट देने से पहले। तो थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि ये मैं हेडक्वार्टर पे फेस कर रहा हूँ इन मेनी मीटिंग्स, और हमारे पास कोई लॉजिकल आंसर होता नहीं है, और उस पार्ट पर हमें एनआरएम डिवीजन को देखना पड़ता है। तो एनआरएम डिवीजन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो दैट इज इन द कंट्रोल्ड कंडीशन में कर रहा है, उनके ट्रीटमेंट उनके रिप्लिका अपने हिसाब से वो डालते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड फर्दर दे आर कंपेयरिंग देयर डेटा सेट ऑफ नेचुरल फार्मिंग विद द एवरेज डेटा ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि कंपेरेबल नहीं है जब मैं मानता हूं जहां तक एज ए साइंटिस्ट। तो सॉयल सैंपल काइंडली 2-4 सीजन का लीजिए, रिप्लिकेटेड फार्म में लीजिए, तरीके से लीजिए, और उसको थोड़ा सा कहीं सॉयल साइंस के इंस्टीट्यूट में एनालिसिस करवाइएगा, केवीके मत करिएगा, करवा करके कुछ एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट तैयार करिए। ठीक है? ठीक है। हाँ चलिए आगे चलिए। क्लिक करो आप। And sir, this is the agreed on project. We have procured 32 drones out of 32 and 34 pilot trained, and more than 4,000 demos are conducted, and area covered more than 3,000 area. With this, weedicide, insecticide, and nutrient is separate. And sir, this is the institute project, characterization, restoration strategy, and effect on farmers' livelihood of salt-affected soils in Pali district in the Rajasthan, sir. With these objectives, sir, to compute block-wise area of the salt-affected soil of Pali, characterize block-wise affected area according to salinity stress, characterize block-wise ground irrigation water quality, and find out region-wise restoration strategy for different categories of salt-affected area. 3 साल का प्रोजेक्ट है ये? नहीं सर, ये तभी तो 3 का, लेकिन 3 में तो होगा नहीं। नहीं तो 3 में तो इसलिए कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है आपके, कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव। सर इसमें आपकी हेल्प की जरूरत है, इसलिए इसको जो फाइनलाइज जैसे होगा उसमें थोड़ा आपकी तो कर दूंगा, लेकिन आपसे आपके मिस्टर डायरेक्टर साहब बैठे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको बना करके एक बार आप करनाल CSSRI विजिट जरूर कर लीजिए। मैं वहाँ रिक्वेस्ट कर दूंगा, एक ईमेल भेज दूंगा, वहां पर जाकर के बैठिए, उसको बढ़िया से तसल्ली से 2-3 दिन रुकिए आप वहाँ। हाँ सर। करिए और सीखिए, सेंट्रल लेबोरेटरी उनकी है, वहाँ सीखिए पैरामीटर्स कैसे क्या निकाले जाते हैं, उनके साइंटिस्ट के साथ डिस्कशन करिए। आपके डायरेक्टर साहब एक चिट्ठी लिख देंगे और मैं भी उसको इंडोर्स करते हुए हेडक्वार्टर से भेज दूंगा डायरेक्टर को, डॉक्टर आर यादव जी को, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब इस फील्ड करे हो तो इसको अच्छे से इसमें डिप मारिए। डिप तभी मार सकते हो जो इसका मक्का मदीना और करनाल CSSRI है, वहां जाइए, पहले बेसिक समझ लीजिएगा, इसके बाद इसमें आप और इनपुट डाल करके तब जमा करिएगा अप्रूवल के लिए। ठीक है सर। इसमें मेरा सबमिशन ये था कि whatever you do, because you are working in a social science institute, तो वो रहेगा वो एस्पेक्ट इसमें वो टाइटल में दिया है, वो एस्पेक्ट एक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव तो उसका वही रहेगा जल्दी जो कि लास्ट रहेगा। वो जो आपके डायरेक्टर ने मैंने कहा इतने ऑब्जेक्टिव हटा दो, आप केवल 3 ऑब्जेक्टिव रखो, उस पर हम चर्चा सेपरेट कर लेंगे, अभी इतना टाइम यहाँ नहीं है। 3 ऑब्जेक्टिव का जो रिजल्टेंट है वो लास्ट आपके चौथे में आएगा, उसी हिसाब से कि चौथे साल में जो आउटकम आया वहां पर जहां पर आपने कहीं 2-4-10 किसानों का इंटरवेंशन किया, तो उसका जो सैलिनिटी का जो इम्पैक्ट है 1 साल 2 साल में नजर नहीं आता है, कम से कम 3 साल तो सोडिक सॉइल में आता है, 2.5 साल 3 साल के बाद उसका इम्पैक्ट आना शुरू करता है। सलाइन सॉइल में भी आपके यहाँ का जो सॉइल है सलाइन प्योर नहीं है, आपके यहाँ सलाइन सोडिक है। अगर आप जोधपुर पाली का एरिया अगर ले रहे हैं तो वाटर सलाइन है, मिट्टी सलाइन सोडिक इन नेचर है, तो उस हिसाब से आपको 3 साल का डेटा तो चाहिए। लेकिन लिवलीहुड का डेटा जो आपको मिलेगा हालांकि 2 साल के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक मैनिपुलेशन जब आप करोगे वाटर के ऊपर या सॉइल के ऊपर, तो किसान को 1 साल के बाद
बेनिफिट अबाउट 8 से 10%। मेरा उस स्टडी एरिया में काम है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। क्वांटिफाइड डेटा हमारे पास है कि 8 से 10% सेविंग उसकी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन रियल लिवलीहुड के टर्म में आपको 3 साल के बाद। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव आप वहां रखिए लिवलीहुड वाला। शुरू के मतलब डायग्नोसिस, कैरेक्टराइजेशन, इंटरवेंशन, देन लिवलीहुड पर आ जाइए। सिंपल सी बात है, बहुत इसमें लंबी चौड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। 10-20 किसान ले लीजिए जहां पर आपको इंटरवेंशन करवाने हैं, केवीके के माध्यम से उनका इनपुट होगा, आपके साल्टर्न वैरायटीज होंगी या जो भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वॉट एवर बेस्ट वहां पर जो संभव है, ज्यादा पैसा खर्चा ना हो और बेस्ट हम कर सकें वो कर लीजिए। लास्ट में ऑब्जेक्टिव आप लिवलीहुड का डाल लीजिए और बना करके तब आपका नाल चले जाइए, एक बार इस पर ट्रेंड होके आ जाइए, कर लीजिए। बहुत अच्छा काम है और आपके बायोडाटा में बहुत अच्छा ऐड करेगा, ये आपके सब्जेक्ट को इनरिच करेगा। ठीक है ओके। ये एक्शन दीजिए, मैं पता है। सर अभी तक इतना काम किया है इसमें सर से मैपिंग, ये विलेज सेलेक्ट किए सर। डॉक्टर साहब अगर आप इतने सीख लोगे कि सैलिनिटी को मैपिंग के कैरेक्टराइजेशन के लिए, इसलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके हैं। सैलिनिटी के कैरेक्टराइजेशन के लिए जो सॉइल सैंपलिंग होती है, इट्स ए कंप्लीट सेपरेट साइंस। आप एग्रोनॉमी हैं, मैं बता दूं आपको कि नॉर्मल सॉइल सैंपलिंग फॉर ओनली डिटेक्टिंग soil pH, EC and soil health card is different thing. But once you are going to characterize the data, soil for salinity and sodicity point of view, you need not to stick only on 0 to 30 centimeter. Rather, you have to go up to the 90 centimeter. तो पूरी प्रोफाइल 90 तक जानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और उतने में कितनी कास्ट आएगी, कितना लेबर लगेगा, कितने मैंडेज लगेंगे, इसलिए कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टू मच है आपके। ठीक है तो उसको कम करिए तो काम अच्छा कर पाओगे। नहीं सर इसमें थोड़ी वही आपकी वो चाहिए, ये फाइनल ढंग से प्लान हो जाएगा तो ठीक है सर। ये ग्रेडिंग भी कर ली थी हमने, इस हिसाब से सैंपलिंग करनी थी। बढ़िया काम आपका है, बहुत बढ़िया काम है, इस पे फोकस करिए ठीक से। सर ये रिसर्च पेपर है सर पिछले साल के। अच्छा, ये थोड़ा रुकिए, पॉपुलर आर्टिकल है, ये चैप्टर है। पीछे चलिए, पीछे ये टेक्निकल स्लाइड दिखाइए। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पब्लिकेशन की। हाँ रुकिए थोड़ा, रुको। ये जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी एंड क्राफ्ट साइंस, ये कौन सा जर्नल है? एल्सेवियर है, कौन सा है? उसका असर भी लेगा। ओके, तो आपका ये काम पीएचडी का था कि यही का था? ये सर पुराने इंस्टीट्यूट का है सर, तो सैलिनिटी का। ये मेरा मेरा भी काम सर पूरा सारा सैलिनिटी का ये शुरू से अब तक। पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूं, क्योंकि डांटने के साथ साथ थोड़ा सा प्यार भी करना पड़ता है ना। थैंक यू। आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं कि कम से कम आप ये अटारी के हाथ मजबूत कर रहे हो। मिश्रा साहब को भी मैं बधाई देता हूँ। दूसरा आपका जो है वो बताइए, इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया आपने? सर ये पेपर में, हाँ, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। सेकंड की। हाँ सर इस प्रोजेक्ट में तो मैं कॉपिया ही था, इसमें तो बस थोड़ा एनालिसिस वगैरह में ही काम किया था, बाकी चलिए, फर्स्ट पेपर तो मेरा ही है सर। बहुत अच्छा। और जो लास्ट आपका चौथा है, इसमें आप लोग कुछ कर रहे थे जहां तक मुझे अच्छे से पता है, और इसको आप और जनरल में डाल सकते थे, और इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में ही डाल दिए होते। देखिए, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ बैठा हूँ, फोरम में बैठा हूँ, कुछ अच्छे जो डेटा है, लगता है कि आपको एल्सेवियर स्प्रिंगर भी नहीं जा सकते, जा भी नहीं सकते। सिंपल से बात, हर डेटा नहीं जाता है, नहीं जाता है। लेकिन तरीके से बढ़िया से तराश करके उस डेटा को पेपर बना करके इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में डाल दीजिए। इसके आगे मैं डॉट डॉट छोड़ दे रहा हूँ, आगे नहीं, रिवील नहीं करूंगा। डाल दीजिए, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है सर बैठे हैं, उनको मैं हिंट दे रहा हूँ। समझ गए सर हम। ठीक है, तो कुछ भला अच्छा हो जाएगा, और मतलब थोड़ी हमारी बेस्ट कर जाएगी। आगे चलिए। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Meena. Now, last presentation, Dr. Jagir. So we are running short of time. Dr. Jagir, quickly finish it. आप तो लास्ट और दिखा दो पब्लिकेशन, बस खत्म कर दो, फिर भी दिखा दो, ऐसे नहीं करो, रन कर देंगे, रन कर देंगे। ऐसा है नहीं। क्लोज करिए, करिए, दोबारा शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए। शेयर कर दिया।
स्लाइड आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बनाई है सर, सुंदर, सिंपल, बहुत सुंदर। राइट, अपना म्यूट कर लो, फोटो एंड म्यूट कर लो। My slides are visible. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. This is the last one from our institute. So I am working as a PI in one institute project and co-PI in one, and one natural project from ATARI Kanpur. And the sponsored project and programs I am looking after the EAPST and EAPSC and CSR. And other role responsibilities are also loaded. ESP and SCSP are not sponsored. So I have ICR का है तो ICR करना पड़ेगा। तुम्हारा बजट से काट के देगा। So this is one status of millet cultivation and consumption in Rajasthan, Haryana state. I am trying to all the things in this project. These are the detailed objectives to analyze the area production and productivity of millets in the selected state of Rajasthan and Haryana, to document millet cultivation practices, and to find out the consumption pattern of millets in the daily diets of farm families, and to assess the constraints. So this is the conceptual frameworks I have prepared. The study will be a sample survey and cross-sectional design. And the sample of study will be drawn from selected states, and the time series data analysis will be also from the part of the study. And I am planning to select 32 districts from 25 from Rajasthan and 7 from Haryana, which have major area under the millets. And basically, it is a millet, palm millet and in Rajasthan and palm millet in Haryana. So these are special methodology, and these are the activity and output plan. And I am working on this collection of technical data, and I will be getting data continuously. And coming to DAP-SP, for scheduled tribe, development action plan for scheduled tribe is implemented by 24 KVKs in Rajasthan, all in Rajasthan. And during the year, KVKs reached to 76,941 tribal farmers in the zone, and these are the details. And this most important aspect is the asset creation, which supports the livelihood of the farmers through small units of livestock and small equipments for improving, reducing the I mean, help to remove the help to minimize the time. And the larger equipments are basically community-based intervention like oil extraction and first processor. And similarly for SCSP, 15 KVKs are implementing, and 9 from Rajasthan and remaining 6 from Haryana. And in this also the capital hand is being utilized for asset creation at individual level and community level. This is a very important aspect. So do you have the capital item also for these projects? Yes, sir. This asset creation is for capital item only. Is also a kind of fund release to KVKs. Okay. And they purchase, they are the owners of that asset. So this is one of our program our division earlier has lead, and we are still completing it. And though not all 26 are reporting the result, I mean progress, but still we are 15. That's just I have to learn one thing, rather questioning you. Is it really MGMG is still running, or it is? Sir, we are requesting for progress, and we should still submitting the request. That's a great thing, but I was aware that अभी इसका
बहुत अच्छा नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, बंद चल रहा है। So because my question has some genuine reason. The recent directives which came from Honorable Minister of Agriculture is indicating that some scientists of ICR Institute are going to visit the KVKs. Okay, वो कुछ बहुत अलग नहीं है. That is an advanced version of MGMG. हालांकि I don't know in what way other scientists of ICR institutes are taking that. It was said that it is giving the opportunity to those scientists to learn from the KVK and going to the villages. Further replicate the idea of KVK and ICR Institute to the farmers. ये थानेदारी करने के लिए नहीं दिया गया, ठीक है, कि आप जो लैब में काम कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको उस हिसाब से लगता है हमें अब रिपोर्टिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा। क्योंकि अब वो हमारे पास आ गया है, कल को रिव्यू मीटिंग होगी तो वो पूछा जाएगा। ये तो चलने दीजिए, ठीक है। तो वो हमारा जो हमारे लिए जो मैंडेटरी है वो ये है कि जो केवीके को हम साइंटिस्ट भेज रहे हैं उसके द्वारा जो इंडिकेटर दिए गए थे वो किस तरीके से चल रहे हैं, क्या इनसाइट नई आ रही हैं और जिसको हम समराइज करके दे सकते हैं, इसको ध्यान रखना। And this is another very important project for British Institute of Agriculture Research and Innovations. And in our zone, 49 KVKs are doing very activity in this project, and you can see the progress. And recently, past year, national level campaign of Viksit Bharat Sankalp Yatra was carried out in our zone. We have also intensely followed on daily basis, and we have reported on daily basis, and also coordinated the reporting of the other 5 ATARIs. So we have turned around how many? 18 lakh farmers were reached during this yatra. And almost 16% of the Gram Panchayat of Rajasthan and 20% of Haryana were reached by the team. Very big achievement. So these are publications, many, but I have two things for. So this is our last one here, no? Yes. So thank you, sir. Thank you. So Dr. Saab, I think I have to give the similar assignment to you also, but otherwise नहीं तो दूसरे कहेंगे कि आपने तो छोड़ दिया भाई मुझे लेने के लिए। So Dr. Saab, आपका जो है रिक्वेस्ट मेरा ये, एक तो इंस्टीट्यूट के लिए काम, पहली बात वो ये है कि जो अभी जस्ट आई हैव गिवन सजेशन की जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का आया है फार्मेट और वो रिपोर्टिंग का, उसको थोड़ा सा सिस्टमटाइज करिए रिपोर्टिंग के पर्पज से, और आप लीड लीजिए और वो ही आपके लीड को हम सारे अटारीज में घुमाएंगे क्योंकि उसी पैटर्न पर सभी रिपोर्टिंग अपनी करेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 थिंग्स, आप ओनली वन सजेशन, जो आप प्रपोजल दिए हैं आईआरसी के माध्यम से प्रोजेक्ट, जो मिलेट की बात या जो क्रॉपिंग और घटा बढ़ा, उसको आपने कहीं रिव्यू करवाया, प्रपोजल को किसी को भेजा था या अप्रूव हो चुका है? आईआरसी में अपना लेवल पे नहीं, मतलब इनिशियल जो ऑब्जर्वेशन आपने लेना शुरू कर दिया कि नहीं? मेरा जानने में अभी तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव करके हम काम कर रहे हैं। तो उसको मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप एक टेबल में बना लीजिए कि आप पहले ऑब्जेक्टिव से क्या क्या वेरिएबल ड्रा कर रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे से, और वो वेरिएबल का डेटा फर्स्ट ईयर में कब आएगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कौन किसका डेटा कैसे आएगा, किस फॉर्म में आएगा, क्वांटिटेटिव आएगा या क्वालिटेटिव आएगा, और टोटल सैंपल कितना होगा। एक अगर टेबल बना लोगे तो उसमें हम कुछ सोशल साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करके जो दूसरे आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं इनपुट दिलवा देंगे तो डेटा की एनालिसिस प्रॉपर हो जाएगी। एनालिसिस हो जाएगी तो थोड़ा अच्छे आप इम्पैक्ट में लेके जा सकते। ये काम आपको दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा मजबूत करें, ठीक है। थैंक यू। एडी सर, हमारा एक दो सबमिशन है सर। जी बताए सर, हम जो ये प्रोजेक्ट वर्क करते हैं केवी केस के थ्रू करते हैं, हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, तो केवी केस वाले कहते हैं सर आपका काम, हम तो ओवरबर्डन है पहले ही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम से एक मेजर इशू है सर ये। सर इसका कोई मैकेनिज्म? नो डॉक्टर रोहिल्ला, whichever KVK is you are taking for Nikara, you have already provided them additional manpower for that particular activity. How they are overburdened then? You have exclusive manpower for that particular activity. सर और भी एक्टिविटीज केवीके के पास काफी हैं सर, उसकी वजह से वो ये कहते हैं। Which KVK like that? मेरे तो सर इसमें 5 केवीके हैं, बाकी जो लोग दूसरे लोग कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है ना सर। जो KVK को बताइए
I will speak to the Vice Chancellor or to their Ds, और आपको जो भी facilitation चाहिए, you will get out of that. Since this is a very genuine question and we should take this question in a positive spirit, as Dr. Mehla Sahab has said, let me give you the broader picture of the country. Whatever project is now being taken by the assembly, हमने कोई compromise करना बंद कर दिया है. जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं हम तभी ले रहे हैं जब अटारी को एक वाईपी या एसआरएफ मिलेगा. नंबर 1 कंडीशन, नोडल जो हमारे अटारी होगी या दूसरी बेटारी होगी. आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें जो मेरे माध्यम से आ रहे हैं. केवीके को भी हमारी 90% चांस में हम रख रहे हैं कि उसको एक लड़का डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल का, चाहे आप एफओएम प्रोजेक्ट की बात देख लें मेरे वाले में, चाहे मॉडल पर्स की वाले में बात देख लें, वो कोशिश हमने पूरी की, लास्ट तक फाइट की, या दूसरे भी प्रोजेक्ट अभी हमने शुरू किया है. कि क्योंकि एक प्रॉब्लम यह है कि टोटल बजट जो है आपका किसी भी प्रोजेक्ट का वो 10% से ज्यादा कंटेक्चुअल हायरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर नहीं दे सकते. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहां तक मुझे पता है कि एक गाइडलाइन है, और मैडम भी बैठी है, क्योंकि उस पर मैं काफी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कर रहा हूं. फिर भी मैंने फाइट करके 10% को क्रॉस करवाते हुए इन सम ऑफ द प्रोजेक्ट आई मेड श्योर दैट कि अटारी को और केवीके को ह्यूमन रिसोर्स जरूर मिलेगा. आपका जैसा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि केवीके के पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं. हम केवल अपना काउंट कर रहे हैं, स्टेट की भी होंगी, एसयूज की भी होंगी, लेकिन आई एम फुल्ली एग्री, आई एम फुल्ली एग्री ये इशू है. लेकिन धीरे धीरे अब हम शिफ्ट करके ट्रांजिशन फेज में आ रहे हैं. लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब ने कहा निकरा की बात, या दूसरे ऐसे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मुझे जहां तक लगता है कि उसमें ह्यूमन रिसोर्स दिया गया है, तो उस प्रोजेक्ट उनमें प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब, उनमें प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट का कोई मैन पावर नहीं उसमें प्रॉब्लम है सर. लेकिन जहां तक दूसरी बात है कि एक ह्यूमन रिसोर्स, और ये डीएफडब्ल्यू का मेरे पास 3 बार राइटिंग आया और हमने काफी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन से भी हमें गुजरना पड़ा, क्योंकि उस समय हमारे पास लॉजिकल आंसर नहीं था. क्या नहीं था जो मैं बताना चाह रहा हूं कि दे आर सेइंग दैट कि आपको जब हमने एक वाईपी दे दिया या टेक्नोलॉजी एजेंट दे दिया, आपको क्या लगता है कि वह टेक्नोलॉजी एजेंट जिस प्रोजेक्ट में है केवल वही एक्टिविटी पूरे साल भर करेगा, और इतनी एक्टिविटीज पर डे की, पर मंथ की, 12 महीने की या 9 मंथ की हैं, जिसके लिए उसके पास टाइम कम पड़ रहा है, या आपको तो उससे 3 से 4 प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं काम, उसको तो आपको काम लेना है. तो पर डे का काम डिजाइन करना, प्लान करके वाईपी या टेक्नोलॉजी एजेंट को देना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है पीआई के लिए. वहां पर हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि पर डे का, पर वीक का काम मैं कितना इसको दे पा रहा हूं. मुझे लगता है कि अवेलेबल रिसोर्स में पूरा नहीं तो कुछ हद तक हम ये क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. So if all the worthy members agree, we can move on to next agenda item, that is presentation of new agenda for before IMC. Dr. Jagir. Yes, sir. व्हीकल वाला है क्या? So this is here. We are on the, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज की मीटिंग का, उस पे आते हैं वापस. This is the proposal for agenda item for the consideration of the 15th IMC meeting of today we are conducting. And the item number 1 is the consideration of annual budget for 24-25 of the ATARI zone to Jodhpur. And as per the B of the institute provided by the HMD, we have been allocated around 10,988 lakhs of the budget. And IMC may kindly approve the annual budget for 24-25 of the ATARI Jodhpur as proposed above. And coming to the item number 2 of the agenda, the approval of condemnation of vehicle, replacement of old vehicle and purchase of new in KVK. So detail of the vehicle to be condemned and the new purchase are as under. We have proposal from 5 kVK of
Haryana and 5 kVK from Rajasthan. The kVK from Haryana proposals were considered during 13th IMC also, but due to some technical issues in papers, those proposals were not approved at the assembly level, and we were directed to propose the condemnation again, and accordingly we are proposing. And for this regard, we have all the relevant papers here. This is the requirement of proposal. First is the vehicle inspection report from RTO. So this is for KVK Panipat, as it was already proposed for condemnation. So they have already got certification of the vehicle from the district level committee, and this is the certificate, and the vehicle is listed at serial number 1. And this is from Kurukshetra. This is vehicle inspection report, and the vehicle has done more than 6.5 years, and almost done more than. And this is from proposal for Kurukshetra, and they have also got a condemnation from the district condemnation committee. And this is for KVK Jind. And this is proposal for condemnation of the vehicle. And this is for KVK Cathal. This is inspection report, and this is the condemnation they have already got from the district condemnation committee. And this is for KVK Rohtak proposal, and they have also got the condemnation of vehicle from the district condemnation committee. And this is KVK Badmer second. The vehicle had done more than 293,000 kilometers, and this is proposal for condemnation of the vehicle. And this is vehicle inspection report for Nagore second KVK. Vehicle has done more than 1.5 kilometer, 1.5 lakh kilometer, and this is proposal for condemnation of the vehicle from the authority is dispute. And this is for KVK Jaisalmer second. The vehicle has run more than 166 lakh kilometer, and this is proposal for condemnation of the vehicle. And this is for Hanumangarh second KVK. So the vehicle has run less than 1.5, but it is very old vehicle, 2014 model, and the condition is poor. So this is the proposal from Hanumangarh second for condemnation of the vehicle. This is Churu second KVK. Vehicle has run 1.65, more than 1.65 lakh kilometers, and this is the proposal for condemnation of the vehicle. Okay, well, complete. Yes, sir. This is what So we except just a minute. So except one case where the total run of a vehicle is less than 1.5 lakh kilometer, all 10 KVKs, they have submitted the due papers. That is inspection report, and also the condemnation report or the vehicle condition report by the respective registration authorities in the respective districts. So now IMC members may offer their comments and observation on the proposal to condemn these vehicles, so that these KVKs may be provided with the new vehicle in place of the old vehicle. Madam? ये जो हनुमानगढ़ का है, ये क्योंकि इसका जो ये जो है इसका बुक वैल्यू भी हनुमानगढ़ का केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1,05,000 करोड़ सॉरी किलोमीटर चली है। उस कंडीशन पे तो it doesn't qualify, but the other condition is that vehicle should not be older than 5 lakh 6.5 years. तो ईयर में तो 10 साल पुरानी हो गई। उसकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये है कि उसके रिपेयर और उस मेंटेनेंस में वो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है।
So it is, I mean, recurring cost उस पे ज़्यादा खर्च हो. So that is what the IMC members need to consider. There's no problem, I think. Proper It's from my side, and it's okay because the vehicle is more than 10 years, लगभग 10 years हो गया है, और इसका जो रिपेयर में भी खर्चा आ रहा है, तो I think it should be condemned. So from my side, budget is okay, and the all 10 vehicle may be condemned accordingly. Thank you. बाकी वो जो गाइडलाइंस है वो पता ही नहीं. हाँ, वो तो आप एक नई जो निकली है 20-1-23 में ना, जी, जो काउंसिल ने सीडीएम से निकाली है, 23-1-2023 में निकाली है, जो स्क्रैपिंग का है पॉलिसी. ओके. वो स्क्रैपिंग की पॉलिसी को कंसीडर बाद में कर. हाँ, वो अभी तो क्या कि अभी तो फिर अप्रूवल ही होगा. नहीं, स्क्रैपिंग मींस इफ दे आर 15 year old. हाँ, 15 का है. बट वो आपके दिल्ली की पॉलिसी है ना, दिल्ली की एनसीआर की पॉलिसी है. दैट पॉलिसी मे नॉट बी एप्लीकेबल इन राजस्थान में जैसे अभी वो पॉलिसी है नहीं, स्क्रैप वाली. 15 साल, वो 10 साल और 15 साल डीजल एंड पेट्रोल के लिए वो एनसीआर में तो है डेफिनेटली. वहाँ तो स्क्रैप ही करना है. तो उसको भी देख लेंगे. वी विल रिव्यू कि वो हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है. अदरवाइज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट. The next item for approval is construction of water harvesting tank. So from 1 lakh liter capacity. ATARI Jodhpur के लिए. Yes sir, this is for ATARI Jodhpur. ऑफिस के लिए. Yes sir, office building के लिए it is as per the government policy requirement. There all the buildings must have the water harvesting system. Then water harvesting is corrected. Currently we have budget in the proposed in the EFC also under works. So ऐसा है, कोई दिक्कत तो नहीं. EFC में है. Proposed तो है sir. This is the EFC approved. I mean, as per the communication received from headquarters, that our EFC has been approved by the cabinet note has been approved based on that EFC, and this item was a part of our approved EFC. So construction of 1 lakh liter capacity water harvesting structure. Administratively, there is not issue. There is no administratively issue, and we have adequately proposed for capital fund also 30 lakh rupees as per the estimates provided by CPWD. So now we are proposing that if IMC approve it, we may take up it in this financial year or subsequent financial year. Subject to availability of funds. हो सकता है. ट्राई तो कर ही रहे हैं मैम. इसी में प्रपोज करते हैं क्योंकि हम सीपीडब्ल्यूडी से ही कराएंगे. बट इन केस अगर इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ तो क्या हम नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं? बजट अभी है तो भी करा सकते हैं. बजट है आप देखिए, एक प्री कंडीशन ये है कि आईएमसी से अप्रूवल चाहिए. उसके बाद तो फिर एएस एंड एफए से एक सेपरेट अप्रूवल हम लेते ही है. तो हमारी तरफ से केस टू केस बेसिस की हमारे पास फंड है. एक ही है मैडम, हमारा छोटा इंस्टीट्यूट है तो 1 लाख तो चाहिए. तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन गो अहेड. एंड इट इज a प्री कंडीशन फॉर ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. I mean in their jurisdiction. If some office building or even up now तो मतलब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी कंपलसरी कर रहे हैं. तो as per the policy of the state government, we should follow the policy also the state government. Thank you. उसी तरह आइटम नंबर 4 भी, दिस इज आल्सो एन अप्रूव्ड आइटम अंडर EFC, क्योंकि एक तो एनर्जी सेविंग का कंसेप्ट है, दूसरा ग्रीन एनर्जी. उन दोनों को कंसेप्ट को लेके ये एक प्रपोजल है कि सोलर सिस्टम अपने अटारी में हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. इट इज आल्सो पार्ट ऑफ EFC which is approved by the cabinet. It will cost another 35 lakh rupees, which is already the item as well as amount is already included under EFC. So it's okay. It's okay. And the
Fifth item is repair and renovation of old administrative building. ये आइटम भी EFC का पार्ट है, और क्योंकि हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग है ना, इट इज ऑलमोस्ट 28 years old, तो उसके और वो बट इट इज वर्केबल. आई मीन इफ सम repair and renovation is done, then this can be given to our staff. And because we are now getting lot of projects, we are project staff, so the present new building will not be adequate to accommodate all those people, and also space. So we need additional space. In view of that, we wanted this. So I propose the IMC to kindly approve this. Expenditure what we have estimated, in fact we got the CPW is the estimate is also around 45 lakh rupees. Around 45 lakh rupees. ठीक है. और कोई आइटम all we have for today's agenda. any No. on 6? It is not an item, but it is my request to all the members. So at least because we have been doing online meetings frequently of IMC, next time I wish that all the members should be offline at either at our premise or some other place. So next time we will assemble there, and next time I will also make ensure that at least one KVK from one SAU should make a presentation before IMC that how they are working and how they have been doing and what problems they are facing. In fact, whenever we go in such meetings, we only tell our achievements and the positive things. ग्राउंड स्टोरी पता नहीं होती. But ground level there are huge problems. KBK is facing lot of challenges. उसमें से अगर हम कुछ भी सॉल्व कर पाए तो अच्छा रहेगा. And I agree with Dr. Rohila कि KVKs are now overburdened. So no doubt. Many departments. In fact, 75% we know, 25% we don't know even. They are working with the state government. So many agencies, and because they are in the district, very close to district collector, so many things comes from the collector office. They cannot deny. In fact, they have to work in that ecosystem. So I propose that 1 KVK from each of the SAUs. We have 7 SAUs under our jurisdiction, so they will also come make presentation before the IMC members, so that we all know What is happening at this point. what is happening. So this is my आपके पूरे हायरार्की वर्टिकल this is my suggestion to सिस्टम में से all of जाएगा. you. जैसे यहाँ क्या दिक्कत presentation होगी? दी और आपका वही में जैसे आप बोल रहे थे, हर बार बोलते हैं कि यहाँ फिजिकली आए, तो इस बार आप आए तो आपने इतना बहुत सारा different है, डिटेल में बहुत बताया. different अभी ऑनलाइन में आप मैं नहीं कर पाता. हाँ. वहाँ तो 5 ब्रेन और 10 आंखें हो तो भी कम पड़ेगी हेड पर. So Dr. DR Misra, Dr. Dwivedi, Dr. Sure sir, sure. We will come. सबको फिजिकली आना पड़ेगा. बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आएंगे हम. Thank you. और एक सर छोटी सी रिक्वेस्ट है जो पहले भी करनी थी कि वो ना एजेंडा थोड़ा पहले दे दिया था. That was this time it happened at any time. इनपुट बढ़िया लगा आपने. In fact, this time मैम क्या हुआ ना कि because दीपावली हॉलीडेज केम और पूरा राजस्थान में तो कल आपके हम आते साथ नहीं आ पाते. मैडम राजस्थान कलेक्ट्रेट एयर मैडम के पास ही थे, वहीं पर मीटिंग हुई. हाँ. But I have received the agenda item, sir. Yes. Already you sent. Yes. Thank you, Dr. Dwivedi. I have received. तो एक्चुअली मैडम का ये है कि कम से कम एक हफ्ते पहले मिले तो पढ़ने में और उसमें एंड आई डू एग्री दैट इट शुड बी गिवन इन जरूरी. और उसमें दिस टाइम क्या चैलेंज क्या था कि दीपावली हॉलीडेज में ऑलमोस्ट 3-4 days, और राजस्थान में तो एक गवर्नर हाउस से एक ऑर्डर आ जाता है उनके यहाँ तो 28 अक्टूबर से और 4 तक उन्होंने बंद कर दिया. 6 तक पूरा 10 दिन हॉलीडे सारे के लिए, जिससे हम मांग रहे हैं कि यार इंस्पेक्शन रिपोर्ट करें. So this was the challenge this time. सर मैं तो
3-4 मीटिंग से बराबर अटेंड कर रहा हूँ। जो भी आपके एजेंडा आइटम, इट्स वेरी लॉजिकल एंड, और खुद ही ग्राउंड लेवल पे आप इतना वो कर लेते हैं सारी रिपोर्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग, तो हम लोग ज्यादा मतलब उसमें कुछ बचता नहीं है। मतलब देखता हूँ मैं खुद अपने लेवल पे, आप इतना सारा आरटीओ से लेके सारी रिपोर्ट्स इतना, और जो हमारी गाइडलाइंस है कि भाई कोई भी व्हीकल है कितना कौन सी कंडीशंस है, तो सारे लेवल पे आप देखते हैं तो जो भी आपके एजेंडा होते हैं वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही लॉजिकल होते हैं। इट्स हमारे लिए बहुत आसान है ये सारी चीजें, मतलब very simple but very hard work. यस यस। It's a great idea. तो बिना ऑब्जेक्शन के किए। जी जी, क्योंकि सारे ग्राउंड वर्क कर लिया हमने तो डॉक्टर साहब कुछ और एजेंडा तो नहीं सर? अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब का सजेशन नोट करिएगा, मुझे अच्छा लगा कि एक केवीके जरूर आए। इट्स नॉट फॉर दी एसएमडी बट आल्सो फॉर द फाइनेंस पीपल, अदर पीपल, कि सिस्टम में दिक्कत कहाँ कहाँ से फेस होती है। जब इनके यहाँ कभी प्रपोजल जाएगा, चिट्ठी जाएगी, तो उनको पता रहता है अच्छा ये दिक्कत होती है, इसलिए जरूरी है। नहीं, उनका एक्सपोजर रहेगा तो हमें सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा हमारे फॉर्मल नोट ऑफ थैंक्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो आई थिंक इन बिटवीन आई हैव गिवन अ लॉट। सो हम तो एसएमडी की तरफ से आई एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल टू दी all honorable IMC member that they have given sufficient time, और rather वो लोग encourage ही कर रहे थे चीजों को। So I am grateful from SMD ICR for the members of this committee for valuable suggestions and encouragement, and also I am grateful to the worthy director Dr. Misra ji. His work I think let me appreciate in one line also. He is very systematic, very logically he presents the idea, whether it is a proposal or any that document or even any agenda. So there is a very less chance that those agendas or items are rejected or not taken on board. They are taken well. So डॉक्टर मिश्रा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया। मैं लास्ट लाइन बोलता हूँ जो हमारे साइंटिफिक फैटर्निटी के लिए है। मेरा सबमिशन और रिक्वेस्ट है, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन लड़का वही आगे लीड करके जाता है जो जिसका दिमाग क्यूरियोसिटी से भरा है और जो क्वेश्चन रेज करता है। मतलब इसके लिए आपको और हमें पढ़ना भी पड़ेगा कि जो भी कमेंट दिए गए साइंस के प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए या मजबूत करने के लिए, माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक हफ्ते में, मुझे पता है कि अटारी में आपका टाइम नहीं है ना आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक हफ्ते में 2 घंटा निकालिए, चाहे जिस दिन निकालो, छुट्टी के दिन, कि जो साइंस आप कर रहे हो, मेरा ये सबमिशन है, रिक्वेस्ट है केवल, कि जो आप साइंस कर रहे हो उससे रिलेटेड लिटरेचर दुनिया में कहाँ पहुंचा है, आप कहाँ पर हो, कहाँ पर गैप है, जहां पर हम छूट जा रहे हैं या पीछे हम हैं, जिसको सीख करके पढ़ करके और अपने साइंस में उसको इंसाइट ऐड कर सके। मुझे लगता है अगर आप ये करोगे तो आपको किसी के बाहर के बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत डिफेंडेबल मोड में रहोगे, और वो चीजें जो मैंने सजेशन दिया आपके प्रोजेक्ट में आएंगी। आपके अटारी के मैंडेट है एक रिसर्च का, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, लेना ही लेना है। और ये जो टीम है अटारी की, उसी को करना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हालांकि हेडक्वार्टर लेवल पर अब ये चीज को डॉक्यूमेंट में लाना पड़ेगा और बहुत एग्रेसिव मैनर में हमें प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। ऑनरेबल आईएमसी मेंबर के लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि केवीके का मैंडेट वंस अपॉन अ टाइम एंड इवन अंटिल नाउ अभी भी फॉर्मली तौर पे ये माना नहीं जाता कि केवीके रिसर्च का काम करेगा या मैंडेटेड है रिसर्च के लिए। बट अब मानो चाहे मत मानो, केवीके ऑलरेडी जा चुके हैं रिसर्च मोड में, ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं और ट्रेवल कर चुके हैं टू सम माइल्स, क्योंकि अटारी अपने आप में रिसर्च नहीं कर सकता, डेटा उसे केवीके से लेना है, इंगेज केवीके के लोगों को करना है, तो दे आर ऑलरेडी डूइंग। तो कहने का अर्थ है कि ये चीज कैसे सिस्टम लेवल पर बिना कुछ चेंज किए, मत चेंज किए हुए केवीके के एफर्ट्स को, जो डॉक्टर रोहिला ने कहा, मैं बड़ी पिक्चर पेश करना चाहता हूं कि केवीके के एफर्ट्स को इसको कैसे फॉर्मलाइज किया जाए, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि हर जगह उनको टीम में डाल भी नहीं सकते हो, अगर मजबूरी है कुछ अगर आपकी, तो कैसे उनको रिकॉग्नाइज किया जाए कि जो चीज कर रहे हैं रिसर्च के तौर पे ट्रीट किया जाए, माना जाए, और हमारा पॉलिसी मेकर सिस्टम जो बैठे हैं दिल्ली में वो भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करें। मैं इस पे कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैं ये हर जगह इंटरवेंशन देना शुरू कर दिया है, प्रोसीडिंग में चाहे जैसे धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया। जब डॉक्यूमेंट में आएगा तो रेफरेंस बनेगा, जब रेफरेंस बनेगा तो पॉलिसी मेकर मजबूत होंगे
कि केवीके भी, चूंकि विज्ञान है, केंद्र है, साइंस की बात कर रहे हो और कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, तो उसे माना जाना चाहिए कि आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और उसी हिसाब से उनके प्रमोशन में या उनके आइडेंटिटी में, रिकॉग्निशन में उस चीजों को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये मेरा कुछ कीवर्ड्स जो आना था, की लाइंस। सो विद दिस बीच में बोल सकते हैं थोड़ा, सॉरी इंटरप्शन। द्विवेदी बताइए। हाँ, मैं थोड़ा अपना अनुभव बताऊं। ये मैं 16 साल अटारी और केवीके मिला के काम किया हूँ। केवीके का बहुत अच्छा नॉलेज है हमको। सबसे पहले कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो चल रहे हैं केवीकेज में, तो रिसर्च पेपर हम लोग का बहुत बड़ा सोशल साइंस डिवीजन में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि 5-6 के ऊपर नास रेटिंग में पेपर वहाँ नहीं निकलते। मैंने बहुत कोशिश की है, 40-45 पेपर निकाले, लेकिन कोई 5.5-6 के ऊपर नहीं गया। लेकिन जब हम रिसर्च में घुसे, वही मेहनत, वही व्यक्ति, 8 पेपर मेरे 8 साल में 10 पेपर मोर देन 7 नास रेटिंग में आ गए। तो मेरा ये मानना है कि जैसे वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस मानते हैं अच्छे अच्छे जर्नल, इसके लिए IARI ने डेवलप किया है एक लिंक, जिसमें IFS में एनर्जी बजटिंग, फाइनेंशियल बजटिंग और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, क्योंकि अभी तक हम लोग केवल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर ही लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। तो ये 3 इंडिकेटर का एनालिसिस बहुत आसान है। उसमें पूरे डाटा भरते हैं, कितना सीड लगा, कितना फर्टिलाइजर लगा, कितना ये लगा, कितना, वो सारा कैलकुलेट करके वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके दे देता है। मैंने इस पर पेपर भी लिखा है। तो मेरा एक सजेशन है, सबमिशन है, रिक्वेस्ट है कि केवीके में कम से कम जो एग्रोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं और अटारी में, वो इसको लीड करें, और IFS या नेचुरल फार्मिंग पर भी ये लागू होगा, तो क्या निकल के आता है, यही मेरा एक सबमिशन है। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ। मिश्रा जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि आज की डेट में, हो सकता है मैं बायस हूँ, मेरा मानना है पर्सनल तौर पे कि जो केवीके का एक्टिविटी जितनी भी रन कर रही हैं, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 70% एनआरएम के रिलेटेड है। 70% आप एनआरएम का पार्ट मानिए। अगर आप स्टैंड अलोन नहीं चल सकता, अगर मिट्टी पानी सपोर्ट नहीं करेगा, तो वन एंटिटी और वन एलिमेंट ऑफ मिक्स ऑफ एनआरएम, तो 70% काम है। सॉयल एग्रोनॉमी के अगर बंदे हैं, इवन फॉर दैट वाटर इंजीनियर भी हैं, वो भी इंटीग्रल पार्ट हैं। तो ये 70% से ज्यादा काम है। और आप सही कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी अलोन से केवल पेपर या साइंस की बात हम साबित नहीं कर पाएंगे। कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है, वाटर बस्टिंग की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, क्लाइमेट की बात होती है, एंड एबव ऑल नेक्सस जो है क्लाइमेट, एनर्जी एंड इसका वाटर का जो नेक्सस है, उस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये जो एग्रोनॉमी वाले बंदे हैं, वही मैं भी कहता हूँ कि केवीके में है, उनकी चांस कम मिलती है या टाइम कम रहता है, क्योंकि दूसरे एक्टिविटीज से ओवरबर्डन होते हैं। पर वही रिसर्च सिस्टम में जाते हैं तो वही ब्रेन है, वही ब्रीडिंग वाले हैं जो केवीके में आते हैं तो शिथिल हो जाते हैं, लेकिन जब रिसर्च सिस्टम में जाते हैं तो उनका वही ब्रेन काम करता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है, टाइम मिलता है। तो हम भी कर सकते हैं, उस लेवल का नहीं भी करें तो हमें खैर उतनी जरूरत भी नहीं है। अगर आप 2 साल में एक कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल दिए जिसकी साइंटिफिक फ्रेमवर्क को क्वालिफाई कर रहा है, और आप जैसा कहा आपने 8 से ऊपर अगर उसका इम्पैक्ट पेपर है, 2 साल में एक ही निकालो, जरूरी नहीं कि हर साल एक निकालो, नहीं, एक 2 साल में एक निकालो, 3 साल में, आपको सेल्फ सेटिस्फाइंग होगा, आपकी यूनिवर्सिटी को और ICR को विजिबिलिटी देगा। और दूसरा, इसका कोई मानदंड नहीं है, चाहे हम जो बहाना कर लें, हमारी जो ड्यूटी है उसकी पहले बनती है, बाकी चीजें बाद में है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हफ्ते में 2 घंटे टाइम हमारे अटारी के साइंटिस्ट या केवीके के बेचारे अगर 1 घंटे भी दे देते हैं, तो बेचारे इसलिए कहा हूँ प्लीज डोंट टेक इट भाई, बेचारे इसलिए क्यों, टाइम से डिप्राइव है, टाइम उनको उतना नहीं है, इसलिए टाइम के टर्म में बेचारे हैं, वो दूसरी चीजों में ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपना। तो आप, मुझे लगता है कि बेटर कर सकते हो, आपके अंदर भगवान ने एनर्जी दी है, टाइम के साथ अलाइन करना केवल आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा कि भी बताया, वो कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। Thank you, Dr. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now I request Chairman sir to give a concluding remarks. So thank you all the worthy members, those who are present physically and also who have joined online. There are very good suggestions coming from Dr. R.K. Singh, Dr. Dwivedi, Dr. Misra, about how we can improve our functioning and how can we show our activities in a better way.
So I think performance, problem, opportunity, prospects, personnel, all those issues will continue. But as Dr. R.K. Singh has already stated, that we have to find some time to scale up our skill or upscale our skill. And I am happy to inform that in our ATARI, we have already taken a step that all SMSs of different subject matter, they will be coming to ICR ATARI for 2 to 3 days for their capacity development. Very good. And whatever best brain available in country, they will be roped in either online or offline, and they will come, they will share their experiences, also the recent innovations and recent advances in different fields which are happening, especially in the context of working design and also working environment for KVKs. So as you told that there is a huge scope and space which KVKs are enjoying and which they can further enjoy, but we have to remodule our achievements. I will say that remodule in the sense, the database management, documentation. We after lunch, I will have one presentation. Dr. Singh is having a presentation after lunch. So that will Capture those things. give lot of multifaceted dimensions of data management, also social, ecological aspects in the different domains of our system. Lastly, I will say that we have been doing a very good work, but there is always chance of improvement. And what I could learn from last 1.5 years working in ATARI, so far we have been working on the basis of averages. That averages kind of thing will not lead you to quality publication. So unless you get the unit level data, their comprehensive analysis, that will never lead you to 10.5 or 11 or 12 impact factor publications. Simple 100 square meter field experimentation done by an institution. They publish their paper in 12, 13, 14 or, but we have so diversity. 66 KVKs, all are a different word in themselves. So if we have, I always say that KVKs and ATARI, they have been sitting on the treasure of data. That is a undisclosed and undermined treasure or gold mine. तो आप उसको जितना ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे उतना अच्छा होगा. वी आर विद यू. डॉक्टर सिंह का एक स्पेशल फ्लेवर रहता है हमारे अटारी के लिए, बिकॉज ही हैज ए लॉन्ग एसोसिएशन विद दिस इकोसिस्टम, और वो ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, टू गाइड अस. उनका जो एक्सपीरियंस है उसका हमें यूटिलाइज करना है, और आगे भी इनका इसी तरह सहयोग और सपोर्ट और गाइडेंस हमारे साथ बना रहेगा. ये हम आशा ही नहीं, हमें विश्वास भी है. और इसके साथ ही मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं. आप सबने टाइम निकाला, इसको ज्वाइन किया. ऑल द वर्दी मेंबर्स, आई थैंक यू कोर ऑफ माय हार्ट फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग एंड गिविंग वेरी वैल्यूएबल सजेशन, रिकमेंडेशंस. सो वी विल कीप ऑन फॉलोइंग यू, और इसको जितनी जल्दी हम इम्प्लीमेंट करेंगे आपको पुनः सूचित करेंगे. Next time we will meet physically. That is my request to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your concluding remarks. And with this, today's meeting is almost over, and I have been privileged to give up this responsibility to propose vote of thanks. तो सबसे पहले मैं
आज की मीटिंग के सब वोट ऑफ थैंक्स तो हो गया कर लिया खत्म और क्या। चलिए हम सबके व्याप पर हम कर रहने दीजिए। हम पूरे आईसीआर सिस्टम की तरफ से आई एम grateful to all the scientists, all the partners, those who are here present and have contributed, and I hope the same will be received from your side in times to come. लंच का टाइम हो गया, जाइए खाइए और अपने अपने काम पे लग जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। विद परमिशन ऑफ